society and mentoring. And mentoring, these innovators require support and mentoring to become successful innovators so as to provide simple but effective solution to societal challenges and major problems faced by society. I believe that the interaction of student innovators, our today's keynote speakers, can would encourage them in every stage of graduation and hatching. The motivation to think out of box would come from the success stories of the innovative young innovators. Well-planned exercises for the students in the afternoon would provide them a platform to share their shyness and show the hidden talent and entrepreneurial talent. COVID-19 has created a lot many challenges vis-a-vis the continuous of education of students, but every challenge comes with an opportunity, and the teachers and students have successfully overcome the challenges and continue uninterrupted teaching and conducting examination during this pandemic time. We are excited to see reopening of the colleges and today's event in the face-to-face mode after a long period of 11 months in this college. We have received a large number of ideas online, and these online ideas we will be discussed with the students, and they will receive selected ideas will be further groomed for idea teaching and hacking. I wish best of luck and success day for everybody. I once again welcome everybody here. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We, through this workshop, aim to build an environment that will facilitate the creation of the social enterprise knowledge through research and empower the student to apply their entrepreneurship and abilities for the great social impact. My pleasure to introduce the first keynote speaker, that is Dr. Savarkar Sharma, CEO, SMBDU, TBIC, that is Technology Business Incubation Center. Dr. Savarkar Sharma is highly trained human molecular geneticist from the University of Texas Scottish Rite Hospital in Dallas, USA. He published more than 40 research papers and has 5 patents to his credit. He has guided more than 30 research projects and 5 PhD theses in his credit. He has been the recipient of prestigious awards like Russell A. Harris Basic Science Award 2012 by Scholastic Research Society, USA. John S. Appleton Spine Research Award 2009 by Texas Scottish Rite Hospital, Dallas, USA. He is the founder of CEO of the first Technology Business Incubation Center in the region of Jammu and Kashmir, with a grant support from NSTEBD, Department of Science and Technology, Government of India, and SMBDU. Since the establishment of the SMBDU is promoting innovation and the entrepreneurship in the region extensively and has supported 40 startups in the region, and with their highly ambitious initiative, 100 startups in GIC. With support from the various stakeholders, they are targeting to bring 100 innovation startups by the end of 2021 in Jammu and Kashmir. Sir, I welcome you on the stage. PPS यार फॉर्मेट नहीं चलना है
चाहिए फॉर्मेट लैपटॉप से आपसे ट्राई करिए हाँ शॉर्ट ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ कितनी चाहिए ਇਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ चला ही नहीं है और पीपीएस है यार ये ਹਾਂ पीपीएस फॉर्मेट फॉर्मेट को पीपीएस और यहाँ पे विंडोज 7 है सर पीपीएस या पीपीटी करती है दीपक अमित को बुलाओ अमित को फोन कर हाँ इसको तेरा नेट कर रहा हूँ सर इसमें वो भी नहीं है नो सर तो पीपीटी नहीं चलेगा पीपीटी से पीपीटी एक्स का पीपीटी है पीपीटी कर जी पीपीटी कर कैमरा उधर कर दो आप सर को करने तो कैमरा आप उनको कर दो स्लाइड हाँ सर सर आप अपने कंप्यूटर पे 2 मिनट रुको सर चलो क्या हुआ कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं सेव एज दूसरा आएगा दूसरा यार इन्हीं वो ना एक मिनट घूमेगा नहीं गिर जाएगा गिर जाएगा इन्होंने खुल गया हुआ पीछे से पकड़ के नहीं होगा क्या? कर तो घुमा दे यार एक बार कर लो कर तो घुमा दो आस्था से ना बस ऐसे 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 ही पकड़ के रखो बस यही करे यार उन्हें इधर से स्यापा हाथ में नीचे नीचे का कैमरा नीचे वो नहीं
सर ये पेन ड्राइव में वायरस पड़ा हुआ है पेन ड्राइव वायरस है, सिस्टम में वायरस है। पेन ड्राइव में सर बस ऐसे बस हो गया चेक करना है हो गया सर एक भी प्रॉब्लम है क्या लिखा था? ये आपका इनका रेडी है ना? सर ये यार सिंगल सीजर की पीटी पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव में करना, वायरस है यार इसको रहने दो, वो मैक फॉर्मेट होगा। नहीं सर पीपीटी फॉर्मेट ये क्या है? ये लिया हो इनकी चल रही है सर की नहीं उनके साथ सर ने पीपीटी उनकी चल रही है इनकी नहीं चल रही आप मेरे को दो, मैं कभी हुई थी Now it's my pleasure to introduce the second keynote speakers of today, Dr. वो किधर गया Pankaj Mehta, Coordinator, University Innovation Cell, Central University of Jammu. He is working as a Senior Assistant Professor in the Department of Environmental Sciences, Central University of Jammu, obtained his Master's कैमरा and पे शो नहीं हो रहा Doctorate स्क्रीन शो हो रही है from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Within 12 years of the industry research and teaching experience in the field of environmental sciences, he also served as a member of the prestigious bodies such as CSTD, MHRD, Government of India, DIAA, JNK Government. He has participated in the national and international seminars and conferences both in India and abroad, and is a trained faculty under the Entrepreneurship Educator Program PM Yuva, and also has 2 IPRS to his credit. Presently, he is working on innovation and startup to inculcate the culture of entrepreneurship in the UT of JNK. May I call upon Dr. Pankaj Mehta to deliver the keynote address. Over to you, sir. A very good morning to all of you. Respected Professor P. Jada, Director of Colleges, Additional Secretary Shri Raina ji, Dr. Ravinder Tikku, Principal GGM Science College, the organizing team of GGM Science College who is holding this workshop on innovation, incubation and entrepreneurship, the members from the GGM, Nadeem and Sabzar, and dear students, a very good morning to all of you. It's my privilege to deliver this keynote address where the UT of JNK is taking this step to inculcate this culture.
So the topic of this workshop, as we all know, it's innovation, incubation, and entrepreneurship, or innovation, incubation, and training. So I will begin my talk directly what we mean by innovation, because we know everywhere in this age we are listening about this. Innovation means Navachar or Navo Namesh, and the decade 2010 to 2020 was the decade dedicated to innovation. The initiative which was taken by the former president Shri Pranab Mukherjee, उन्होंने ये 10 साल innovation को dedicate किए. And this national education policy also says that now the research should be innovative. Research and innovation एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. Innovation means what? Innovation, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अब हमारे देश में बनेगा. So innovation को हम कैसे लेंगे, कैसे हम समझेंगे? The innovation starts with an idea, and everybody is full of ideas. But innovation को तभी रियल मायने में इनोवेशन कहेंगे जब उसका प्रॉफिटेबल इम्प्लीमेंटेशन होगा सोसाइटी में. तो देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ commercialization for an idea. Means idea को incubate जब हम करेंगे. Incubate means when we will do effective amount of research on those ideas and incubate those ideas so that it can be profitably implemented into the society. तो अगर आप ऊपर ये फ्लो चार्ट अगर देखें, idea goes to research, then it goes to IP disclosure. IP disclosure means intellectual property disclosure, means बौद्धिक संपदा. आपका जो आइडिया है वो आपकी बुद्धि से उत्पन्न हुआ है. So we need to take our disclosure, we need to protect that idea so that others should not take the credit. अगर आपके पास कोई आइडिया है, the first responsibility is we need to protect that idea through IP disclosure, जिसमें कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, डिजाइन पेटेंट्स है. All these things comes with this starting of the idea. Idea, research, IP disclosure, then review. We need to review, then filing of the patent so that we can generate certain amount of money. अगर वो commercialize होता है, वो कहते तो हैं कि हमारे इतने पेटेंट हैं, but वो मार्केट में effectively implemented नहीं हो पाए, तो उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि वो मार्केट में properly implement ना हो. Then commercialization, and which leads to revenue generation. आज हम इस ज्ञान के मंदिर में पैसा लगाया गया, हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, और अल्टीमेटली अब जो फोकस है गवर्नमेंट का, वी नीड टू पुट दिस नॉलेज टू जनरेट मनी, because we have invested money to create educational structures. Now educational structures, it's the responsibility of the colleges, universities, that now we should solve the problem of the society through new innovations where effective amount of research need to be done. In this, innovation का मतलब profitable implementation है, केवल idea ही innovation नहीं है. And why we are focusing, why not many workshops are being organized each and every place in our country, because they are the key drivers in the economic growth and in the intellectual property of our nation. जब हम नेशन की बात करें, अगर इस बार का, इस साल 2020 का अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें, इंडिया has been ranked at 48th place. 2019 से 2020 एक साल में हम 4 रैंक ऊपर हुए हैं. 131 इनोवेटिव इकोनॉमीज जो कि रैंक की गई, उसमें इंडिया की पोजीशन 48 है. एंड द टारगेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग दिस इन फर्स्ट टॉप 10. अभी जो लीडर्स हैं पूरे विश्व में वो है, जो सबसे पहला देश जिसने ये ग्लोबल इनोवेशन इकोनॉमी में लीड किया वो है स्विट्जरलैंड, followed by Sweden, followed by USA, followed by UK, followed by Netherlands. तो अभी हमारा जो कंसेप्ट है, जो देश का जो चल रहा है इनोवेशन पे, हम लोग अग्रसर तो हो रहे हैं सही दिशा में, because it is adding to our intellectual property and to the revenue generation. Next. Now here, if I want to make you understand idea, incubation, execution, और जो इनका क्रक्स पॉइंट है वो है इनोवेशन. नवाचार के ऊपर आपने रिसर्च करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तभी वो रियल मायने में आइडिया, इनोवेटिव आइडिया कहलाएगा, जब तक वो मार्केट में जाएगा. एंड टू ब्रीफली
give a brief introduction of our university, Central University. We are next door to you, some 25-30 kilometers away in the district Samba. We have established the innovation cell in the year 2014. हमने 2014 में अपनी यूनिवर्सिटी में एक सेल इस्टेब्लिश किया और इसी प्रोटोटाइप को अगर जीजीएम साइंस कॉलेज भी एडॉप्ट करता है, then I think that we can also help the students get themselves IPR registered in their name so that they can also be benefited from this college as well as they can raise the name of the UT at the national level. हमने यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करी 2015 में और हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो स्पॉन्सर्ड है एमएसएमई द्वारा, जहां पे 8 लाख की फंडिंग अवेलेबल है. Our incubation center is supporting the funds up to 8 lakh for product manufacturing. अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं, then we will support. The funding is up to 8 lakhs. We have also established the Institution Innovation Council. ये जो IIC का establishment has been established as per the guideline of Ministry of Education. और ये IICs जितने भी IITs हैं, NIITs हैं, Central Universities हैं, each one of them is having IIC. So GGM Science College भी अगर Institution Innovation Council establish करे to begin with, बड़ा normal process है, and that letter will go to Ministry of Education. Through this council we can start working along with the support of ज्ञान. जिस पार्ट को ज्ञान में भी आज अपने आर्म्स हमारे साथ एक्सटेंड किए हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए. Now what we are doing, nurturing of innovative ideas for commercialization. The basic motto is idea. अब अगर आप ये बात कॉलेज में कहते हैं everybody will come with lot of idea. To begin with we have to throw the problems and ask the students, if you have an idea for this problem then it makes sense. If you will simply ask the कोई idea है then they will not understand. आइडिया किस पे, समाज की समस्याओं पे, इस लोकेलिटी पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर किसी के पास आइडिया है, those ideas can be welcomed in each stream. It can be in the field of agriculture, energy, environment, water, anything, and those ideas can be incubated if they have potential. IPR can be taken in and then effective research can be taken in और उसको हम स्टार्टअप के फॉर्म में भी लॉन्च कर सकते हैं. नेक्स्ट. Now to begin to give a more elaborative part, IP जिसको हम बौद्धिक संपदा कह रहे हैं, उसमें कॉपीराइट से पेटेंट्स है, what I will call और geographical indication. जैसा कि हमें पता है कि कश्मीर का जो केसर है, कश्मीरी केसर को GI मिल चुका, because it is now on the global level. और similarly डोडा की गुच्ची उसको भी GI मिल चुका है. Effective research can be taken in for lot many things which have not been given the proper attention. तो हम इस वो लोग, वो बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर हम इस जगह पे मैंने एक्सप्लोर किया ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमारे ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे रजिस्टर्ड नहीं है. देयर इज लॉट मनी नॉलेज व्हिच हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड ऑन दी TKDL. TKDL है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. अगर यहाँ का ज्ञान उस लाइब्रेरी में ऐड हो सकता है, वो भी हमारा एक इनोवेटिव आइडिया है जहाँ पे हमने एक योगदान दिया. वो आइडिया किसी भी कॉलेज से निकल के जा सकता है जहां पे ट्रेडिशनल नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है. सो दीज आर द स्टेप्स ऑन व्हिच वी कैन स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग. नाउ नेक्स्ट. Now there is because these lectures will form once after, because this is a very basic lectures what I am giving. These are the names where WIPO, एक जब आप कहते हैं मेरे पास कोई आइडिया, तो सबसे पहले हमने WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना है कि कहीं हमसे पहले किसी ने उस समस्या को सोचा तो नहीं. If that idea has been registered under WIPO, your idea is not innovative. जो सोच आज मुझे आई किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, हो सकता है उससे पहले किसी ने सोच रखा हो, वो WIPO पे हमें मिलेगा. And there are various conventions related to this, like Geneva Convention, Brussels Convention, WIPO Copyright Treaty. These are the documents which will be handed over to the Innovation Council if it will be established in the college, so that they can go through this and explain the students at the local level. Next. Yes. The thing is, जो हम पेटेंट की हम लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा कि I have 50 patents, I have 100 patents. The basic question is how many of them have been commercialized? क्या वो रनिंग है? क्योंकि we have to pay the fees. और एक पेटेंट 20 साल के लिए ग्रांट होता है, और अगर वो कमर्शलाइज नहीं, we cannot even pay the fees. So that whole exercise goes in vain.
सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई पेटेंट फाइलिंग एक्सपर्ट है कॉलेज में, who can extend his help, or we can go to nearby areas, like we can come to our university, we can hire some other good experts from the nation, those who can help in taking copyrights. और copyright केवल face expression का, आपकी PPTs का, आपके anything what you have thought newly need to be protected first. You can take copyright of that, and later on with the product or process you can go patent filing. Next. Now these are certain examples of GI. जैसे स्विस चॉकलेट है, अब हमारे पास भी यूटी में 2 GI तो मिल चुकी, एक तो कश्मीरी केसर और दूसरा डोडा की गुच्ची है। There are lot many in the process. तो वो जोग्राफिकल इंडिकेशन उस जगह को भी हम नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, this is some of the work what we are doing, because किसी चीज को समझाने के लिए I need to explain with various examples, and this is the example what we have done. In our university we have established a medicinal plant gallery. हमारी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका एक समूह हमने कलेक्ट करके एक गैलरी के फॉर्म में अपनी यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले किया, और इसका मैंने कॉपीराइट लिया हुआ है। इस कॉपीराइट का नाम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, और वी आर द सेकंड यूनिवर्सिटी हु हैव डन दिस, फर्स्ट वाज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से अगर हम अपने जीजीएम साइंस कॉलेज या जम्मू की लोकेलिटी के ऊपर, इट्स ओनली फॉर ये प्लांट से रिलेटेड, अगर यहाँ पे एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉथ की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अगर हम उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के इलाकों में, उसको हम डिस्प्ले करें गैलरी के फॉर्म में, या कुछ स्टार्टअप लाइक कैंपस स्टार्टअप्स कैन बी स्टार्टेड, लाइक देयर आर वेरियस कैंटीन्स व्हिच कैन बी स्टार्टेड। हम बार-बार कॉर्पोरेट के लिए लोगों को देखा करते हैं, अगर हम स्टेशनरी बच्चे ही सीईओ बने, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है वो सीईओ से कैंपस कंपनी शुरू करे, और जब वो ग्रेजुएट पास आउट होके जा रहा है वो कंपनी का सीईओ दूसरा बच्चा बनेगा। इसमें लोकल जॉब क्रिएशन होगी, लोकल जॉब क्रिएशन इन द सेंस लोकल स्टेशनरीज विद इन द यूनिवर्सिटी, local problems for what we are running in the campus startup mode. हम ये कह सकते हैं जीजीएम साइंस कॉलेज या एनी कॉलेज है 2-3 कैंपस स्टार्टअप और बच्चे ही उसको रन करते हैं, जैसा आईआईटी और एनआईटी में कल्चर है। तो उससे आप सेल्फ ड्रिवन मोड में जा सकते हैं और वहां पे आपको लेटेस्ट आइडियाज मिलेंगे। वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, अगर आप यहाँ पे कोई जगह को डेडिकेट कर दें फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, सपोज फॉर एग्जांपल इफ सर्टेन थिंग्स गोज ऑफ, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाता है, व्हाट वी डू, वी यूजुअली थ्रो ऑफ, उसका एक पार्ट खराब हुआ, पूरा मशीन खराब नहीं है, we can bring that machine and we can use those parts, so again it will be a revenue generation what we can do at the local level. So these kind of ideas we can put into the colleges and we can dedicate certain responsible person who are a good connect with the students. सबसे पहले उस connect को हमें खोजने की जरूरत है और उनको वहां से attach करना है. Next, the IPRs what I have taken to boost this culture. एक मैंने एक innovator like environmental friendly recyclable duster के नाम से एक प्रोटोटाइप रेडी किया है. हमारी कारपेट वीविंग इंडस्ट्री, हमें पता है हैंडलूम सेक्टर यहाँ का एक ट्रस्ट एरिया है, और अगर इसको हमें बूस्ट करना है, आई हैव डिजाइन्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ PFR डस्टर, और इसका भी हमने IPR ले लिया है. और IPR लेना, इफ यू विल ट्रेन दिस anybody who is sitting in this hall, he or she can file within 10 minutes. It's an online process, and within a month or 2 months it will be given the IPR if it has potential. So the smart जो हम लोग डस्टर्स यूज कर रहे हैं करंट प्रैक्टिस में, they are not smart because it contains plastic and resin which is environmental friendly नहीं है. अगर हम हैंडलूम ड्रिवन डस्टर्स बनाएं और उसको मैंडेटरी पॉलिसी के तहत स्कूल और कॉलेजेस में दें, क्योंकि जो स्कूल्स में यूज कर रहे हैं उसमें वुडन पार्ट है और जो हम स्मार्ट डस्टर कहते हैं उसमें प्लास्टिक है. ये वाला डस्टर ना प्लास्टिक लेगा ना वुड, एंड इट इज चीपर आल्सो. So if this kind of prototypes can be extended in the more research can be taken in, because a prototype ready आपका IPR आपके पास है, कोई इसको ले नहीं सकता है. अब इस पे extensive research करने की जरूरत है, so that it can also come up as a new startup for the country in the academia sector. So इस प्रकार से आप भी सोच सकते हैं. There are lot many things which can be taken up. Next. Now again we are mentoring the students of जवाहर नवोदय विद्यालय. जवाहर नवोदय विद्यालय जो बड़ौदा में है, उनके हम मेंटोर हैं. Students used to come to our place. ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं 8 से 11 तक.
They always come because अभी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट को साइंस का एक्सपोजर देना है, बिकॉज साइंस निकल के जा रही है, nobody is coming towards the science. So these students come to our university, we give them the exposure, what kind of the research, what kind of the innovative things university is doing, so to develop the interest so that these students can also come up to the universities and take science as a career. Because अभी जो startup policy JNK की CII में 2016 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, there are many questions, like there are very innovative faculties also within the college who have various ideas, और वो कहते हैं सर why we will give this because it will be filed in the name of the college, we won't get the revenue. लेकिन अभी नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी 2020 आ चुकी है NISP, और उसमें फुल शेयर विल बी गिवन टू द पर्सन जिसका वो आइडिया है. तो इसमें अब कोई ये बात बहुत ज्यादा समस्या थी कि भाई 30% funds will be given to the college, why I will file that patent in the name of college. You file that name with the affiliation of the college, take the benefit, because as per NISP new innovation startup policy Ministry of Education ने वेबसाइट पे डाल दी है. We can also go through this. Next. Now, apart from this knowledge what we are generating, we are also spreading the knowledge what we are coming across. अगर हम किसी knowledge के across आते हैं तो हमारा ये माध्यम है कि उसको हम spread out करें, because यही मिशन ज्ञान का भी है. Look for the innovation, search for the unmet need, celebrate the innovation and make the people aware. It is not necessarily every knowledge we will be generating, we are the pioneers. If we will come across a person, if we will come across this knowledge, we are spreading that knowledge. और इसमें हमने एक ये हरीमन समर जोन एप्पल, जम्मू में अगर मैं कहूँ गर्मियों में सेब मिलेगा, सब कहेंगे सर जम्मू में एप्पल्स कहाँ मिलेंगे. There was a farmer who was of Noorpur, हरीमन उनका नाम था, उन्होंने ये वैरायटी डेवलप करी और इसके इतने सारे हमने बूटे लगाए, अपने विश्वविद्यालय में लगाए, राष्ट्रपति भवन में दिया, along with the support of National Innovation Foundation. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ हमारे सेल ने इनके इनोवेटिव आइडिया को स्प्रेड आउट भी किया और इसको हमने नाम दिया समर हनीमन 99 समर रोड एप्पल. एंड अगर आप देखना चाहें, we can always come to our place and I can show you that these are giving the fruits also. It gives fruit in the cycle of 3 to 4 years, and our cell has promoted and made this person who was a farmer the national level. Next. And finally, we have done this biodiversity survey. जो मैंने बताया कि अगर हम प्रॉब्लम सोचते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो अपने ही सराउंडिंग्स में ही इतनी सारी चीजें which will give various innovative thoughts for which we can start. And this 600-acre campus of our university, we have divided it into 13 tracks and started mapping the biodiversity, जिसको मैंने गैलरी के फॉर्म में फाइनली शो किया और उसको एक डॉक्यूमेंट हैंडबुक के फॉर्म में अभी एलजी साहब से 22 जनवरी को रिलीज भी करवाया. तो अगर आपके पास छोटा सा आइडिया है, वो इतने ऊपर तक ले जाएंगे, मतलब you will be satisfied that yes I have done something what I have thought, because nothing is small, nothing is big. It's basically the urge what is present in the belly of the youngsters, and they also want that they have the energy, but that energy need to be channelized, and our innovation cell mandate is to channelize that energy into right direction. Next. These are the certain innovators what we have identified, और इनके innovations को हमने जो नाम दिया आप पढ़ सकते हैं. lensless microscope, a microscope without a lens. This was the innovation given by the Sajjad Rasool and team, and we have identified that innovator. Another innovation of Sajjad is heater without element. There is a heater without element. So they have these models, these prototypes are with us. We have identified those people. They are from Kulgam, they are from the valley, and they are in touch of our innovation cell, and we have documented their innovation with our cell. Next. And to finally wind up, I would say that is the motto, बुद्धि ज्ञान में शुद्धि. बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है और आज हमें ज्ञान की जरूरत है, because we have learned that we have to respect the knowledge, and knowledge comes with the new thoughts, new ideas, new creativity, और ultimately end कहाँ करेगी? Entrepreneurship पे, startup पे. आज हम डरते हैं entrepreneur का नाम सुन के, because we don't know, because failure is associated. But the thing is, this entrepreneur, मैंने तभी entrepreneur का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि movement your idea has the potential, significant amount of research has been done. आपका startup का आप एक entrepreneur बन चुके हैं, and you are providing the jobs. So जो mandate है, we have to become a job provider, not a job seeker. So we can achieve on this with this basic start what we have done today.
Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, as you said, that innovation is an idea. Sometimes an idea can change the world. So we must support the students' passion for the good technology forward. Our mementos are the token of the heartfelt gratitude. So I call upon the convener of the workshop, Dr. Jagdish Singh, to kindly present the memento to Dr. Pankaj Mehta. So please. I think sir is not here. So Rahul sir, please. Rakesh sir, please. Thank you very much for your presentation. No, I would like to call upon Dr. Savarya Sharma to deliver his talk. Sir, please. राकेश साहब नेट ठीक चल रहा है हमने कर दिया हाँ कर दिया मैंने आप करना यार आप इधर देखिए मैं ये कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे लगाया मैंने क्या मुझे नहीं आपने शेयर कर दिया इसको ना आप कंट्रोल करो मैं कंट्रोल नहीं करूँगा ये मैं अपना डिस्प्ले कर रहा हूँ खाली Okay, good morning everyone. So without wasting time further, I should continue. August gathering, faculty, students. Dr. Pankaj has already taken care of a lot of technical things, and I believe he has made my talk a lot easier to, so that it gives me flexibility now to share what actually I wanted. This typical term innovation in entrepreneurship, it's in light, as Pankaj ji ne bola. And before going to okay. So before going to actually the topics, I would like to start with a story. And story is about straw. So we all know straw. हर किसी ने straw के बारे में सुना होगा. It is interesting that the people straw is for almost 7,000 years. You know, 7,000 साल पहले से straw use हो रहा है. But what about modern straw? Modern straw आया कहाँ से? Why I'm talking about straw? I'll come to it in a minute. Modern straw
came in some 150 years ago, and Marvin Chester is the father of modern straw. Start हुआ कहाँ से कि after his work in the office in the evening, so he was having his drink, and at the time the straw people were using, it was a grass. That means we all know that grass dry, so that one can use it to sip. But what was happening? What happened to him? कि जो राई घास है, it's a grass, so उसका जो straw का कुछ part उसके drink पे आ गया, and he felt very uncomfortable with it. भाई घास मेरे drink पे आ गया, so he thought I have to come up with some different. So he started. He figured out a way. Pencil के ऊपर paper को roll किया, glue लगाया, and that gave the first straw. So what happened with that? He figured out that straw, and then due course of time he developed the, the actual Awarness straw. But why I'm telling this story, it has a reason, so I'll come to it. Next, ये जो आपको ऊपर sketch दिख रहा है, it's from Smithsonian magazine, जो कागज पे दिखा, जैसे हम लोग काफी बार डूडलिंग करते रहते हैं कहीं पे बैठे हुए make sketch, and it is one of the kind. And Mr. Joseph, he was sitting in a cafeteria अपनी बेटी के साथ, बहुत छोटी थी, 3 साल, I think ये 5 साल. स्ट्रॉ तक ये जो चेस्टर साहब का स्ट्रॉ तक यूज होने लग गया था, बट the kid is small, and as she is trying to see milkshake from the glass, she is having problem. उसको पीने में मुश्किल होती है, क्यों? क्योंकि तब स्ट्रॉ बिल्कुल सीधा होता था. जो चेस्टर साहब ने डिस्कवर किया, तो बैठे बैठे जोसेफ साहब को आइडिया आया कि अगर मैं इसमें एक बेंड ऐड कर दूं तो क्या होगा, प्रॉब्ली इट विल मेक माय लाइफ इजियर. और वही जो स्केच है ये आप पेपर में देखें. ओके, तो जो आप स्ट्रॉ देख रहे हैं ऊपर जो पेपर, ये डूडल है. उस रेस्टोरेंट में बैठे बैठे जोसेफ साहब ने ये ड्रॉ किया, एंड यू कैन सी due course of time he modified it and filed a patent in USA in 1936. and अभी हम देखते हैं अलग अलग तरह के जो bent straws हैं, that is from Joseph. And you know that Mr. Joseph didn't stop there itself. He made a company. उस कंपनी का क्या था, ये straw बनाना. Technical details, financial benefits पंकज जी ने काफी शेयर कर दिए, so know we have a background. No, his straw की मदद से he has a company, and his family is a billionaire, multi-billionaire. So इस स्लाइड का पर्पस क्या है? इस स्लाइड का पर्पस ये है कि when we talk about innovation, when we talk about invention, so जो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती है ना, कि बहुत बड़ा चाहिए, that is not the case. Figuring out a simple problem, bringing out a new solution to it, that is invention. What is invention? What is innovation? I will come to it. But that is the point. Okay? Probably आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ एक example है, ऐसा हर बार थोड़ा होता है. So I have another example for me. There are a lot many. Velcro. हम सब जानते हैं Velcro के बारे में. Everyone knows about what Velcro is. I tell you, Velcro आया कहाँ से? This person, Mr. George, he is a mechanical engineer and dog lover. तो अपने dog को लेके घूमने फिरने जाता रहता था फील्ड में. On the way where usually when he noted कि जो उनके dog है उसके body के साथ ये जो हमारे यहाँ birds, हमारे I don't know, कि उसके body के साथ कांटे लगे हुए मिलते हैं उसको हर बार. And he was trying to figure out a way कि मैं किसी तरीके से अपने डॉग के जो हेयर की जो इंटेंगलमेंट हो जाती है इससे छुटकारा दिला सकूं. बट वो तो पता नहीं मुझे हुआ या नहीं हुआ, बट व्हाट ही डिड, ही डिस्कवर्ड, आई वुड से इट इज एन इन्वेंशन, बट ही डिस्कवर्ड इट कि व्हाट इज हैपनिंग इज दिस स्पाइक्स एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हम जिसको वेल्क्रो के नाम से जानते हैं. सो ही इन्वेंटेड एट द मोमेंट दैट इफ वी कैन यूज it, we can manipulate this, we can develop a mechanism, or we can develop a product that one can use and
again, Velcro, we all know what Velcro is, है ना? So Velcro is actually who can loop fasteners. अगर आप नॉर्मल भाषा में यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज who can loop fasteners. Velcro is a proprietary item. I'm getting it. Velcro का जो नाम है वो इन साहब की कंपनी के साथ है, as it's indicated here. Velcro, this company generates 60 million yards of Velcro each. Okay. So probably I think with this there are a lot many more examples, बहुत सी examples हैं. इससे एक चीज तो पता चलती है कि हर बार कुछ बहुत बड़े की जरूरत नहीं है. छोटी प्रॉब्लम, उसकी solution is an invention, and if you take it towards commercialization, as Pankaj ji has said, it will become innovation. So here I just try to, because we have a lot many students around, and I am also a teacher and a researcher. Biology is my background. Hamaरा mindset, and this is a science college, and mostly here are from the science background. हमारा एक जो mindset है research, of course, figuring out, bringing out something new. So that is research. Another component when you add to it, that bringing out profit out of that research, that becomes what entrepreneurship and this all the thing we are moving ahead presently. There are two views of creativity. Why I am emphasizing on it again? अगर हम में से किसी काफी लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो कुछ different type के लोगों के लिए होता है वही. I don't believe in that. I believe in the social emotional stage of development. As you can see here is one view is elite view. Elite view suggests कि भाई सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको innovative idea आते हैं, वो extraordinary लोग होते हैं. Okay. Another one is dependency. Dependency means your social setup. आप हम सब लोग जानते हैं necessity is the mother of invention. हम बार-बार पढ़ते हैं कि भाई जिस तरह जरूरत पड़ती है probably we innovate. And I believe that is the case. Nothing is exceptional. जुगाड़ आप लोग commonly सुनते होंगे. There would be situations हम लोग फंसे होंगे problem में, तरीका ढूंढ के हमने उसी वक्त कुछ innovate जुगाड़ दिया होगा कि I get out of it, right? So innovation could be a process, innovation could be a product, innovation could be anything. Again, emphasizing on a problem and a solution. And if it has potential commercial value to it, it becomes innovation, and you can take it towards entrepreneurship. Okay, so we debunk this thing here itself कि innovation या invention कुछ exceptional लोगों का है. It's all just manipulating your thought process, taking it towards different direction. If you are able to do it, you are an innovator, you are a scientist. So, putting it formally in words, realities, creativity is not exclusive. It can be developed in all persons. Anybody can develop it himself or herself. Depends on what is it required. Three components. Of course, skill set. We are attaining skill set. We are having our degrees. The minimum requirement is done. As a science graduate, as a person related to science, that minimum skill set is already there. Now comes the next thing. So the skill set we have attained, whether we are able to use it. So that is the critical question. So that is the creative process. That means जो हमने attain कर लिया skill set, क्या हम उसको use कर रहे हैं? हम use करते हैं, but हम different तरीके से use करते हैं. We don't see it with this perspective कि मेरी innovation या मैंने जो figure out किया है किसी दूसरे के काम आ सकती है क्या? What is business? You develop something different or you get something, and if other person is able to use it, he or she is going to pay you for that. Huh? That is business. Okay, so that is the perspective you need to bring. And I personally believe in different three components. जैसे सबसे critical component है intrinsic task motivation. Means are we motivating ourselves कि मुझे ये करना है? That means the gap is, बोला जाता है ना कि gap क्या रहता है हमेशा idea और execution के बीच में gap क्या रहता है कि taking step and executing. Okay, what we do, we all suffer from being
I'll share a personal viewpoint here. So being a person from the region, I belong to Punch. I was a graduate. I was on the other side, I think maybe 10 years back, probably. Uh, I had my limitations. Limitations mean, सबसे बड़ी limitation, coming out of the comfort zone. कि shall I go ahead? क्या मैं आगे जाऊं? शर्म. I'm sharing personal perspective we also from हमारे यहाँ locally. Many of the innovators I could see, I believe are here, but gap कहाँ होगा? Just idea. बहुत अच्छे ideas होंगे, but probably those ideas will die down along. Reason, we are not coming out that we execute it and make that idea a reality. Okay? उसमें different components है, failure का डर एक सबसे बड़ा component है. So I personally believe this motivation is the critical component. Irrespective of कौन क्या सोच रहा होगा, कौन क्या बोलेगा, किसको कैसा लगेगा, you have to break this. You have to break this. Once you are able to do it, done. So creativity can be anything. So if you can see here, अगर आप इसको देखोगे, तो it could be any absurd kind of idea. आपके पर्सपेक्टिव से आपको लगेगा कि बहुत absurd या किस तरह का वाला हो. You can see different type of examples. Again, if the idea is able to bring in financials to you, if it is able to bring in business to you, if it is able to bring money to you, that is innovation. Talking about जैसे मैंने बोला था कि हम कितना complex सोचते हैं, and as innovation and this invention is a continuous process, ये रुकता नहीं है कभी. ऐसा नहीं है कि एक बार एक चीज बन गई, okay, because this is always it happens to us, अरे यार ये तो already exist करता है. So if the thing is already there, अब तो इसमें कुछ नया किया नहीं जा सकता. So I have an example, अगर आप यहाँ पे देखोगे clear cut, किसी जमाने में मोबाइल फोन का साइज ये होता था, and I think मैंने तो देखा इस साइज का, so I believe काफी लोगों ने देखा होगा इस साइज का मोबाइल फोन. किसी जमाने में हमारा जो कम्युनिकेशन मेथड होता था वो ये पोस्टेज मेथड होता था, एक लेटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you can see there are different examples communication के. Today probably we have an integrated one. जैसे हम मेरे example मेरे screenshot में ये WhatsApp, Skype, FaceTime and all that. So it has integrated both आपका this one communication का letter system as well as technology, and there are some examples where we are going in the future. Okay, so it is always continuous process. Only thing is figuring out कि उसमें problem क्या है और solution क्या होना चाहिए. I'll give you an example. While I'm talking in this call, I figured out कि my voice is echoing. बहुत ज़्यादा echo कर रही है ना, बहुत ज़्यादा echo कर रही है, potentially काफी words we are missing. हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? It's just simply figuring out the problem and then bringing out a solution. It's all matter of that. That's it. Okay. So that problem can be. Okay. Bringing it to formal way. What are innovations? And as I said earlier, what is difference between invention and innovation? So when it is simply creativity, when we bring something of new, it is innovation. But when this invention has a profit associated with it, it becomes innovation. Okay, so this is where the emphasis is. We have been, India have been associated with from the ancient times, but we didn't go towards more of an innovation kind of thing, because when it is a present is a global world. So when it is a scenario, then probably we shouldn't restrict ourselves to invention only. That means I'm emphasizing it. Reason is I'm calling upon all the researchers. हम scientific publications करते हैं ना, basically paper publish करते हैं. Okay, so it shouldn't restrict to paper itself. If it has potential to become a profitable thing, we should go for it. Reason is there is a reason.
The reason is if we are not able to, if we are not doing it that way, Pankaj has shared technical details about patent कैसे file करते हैं, globally उसकी कैसे value होती है. So once you file a patent, it has a global value. अगर हम उसको उस commercial perspective से protect नहीं करेंगे, तो what will happen? हमारी अपनी की हुई research second person हम ही को बेचेगा ज़्यादा cost पे. Why cancer drug is very expensive? या मोस्टली जो ड्रग जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है हमारे पास, या जो भी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है, एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि दे डिफाइन उसका कॉस्ट क्या होगा. क्यों? क्योंकि दे हैव प्रोटेक्शन, दे हैव देयर आइडियाज और व्हाटएवर व्हाट दे डू. वी आल्सो डू रिसर्च, वी डू इन्वेंशन, वी डू डिस्कवरीज, वी डोंट डू इनोवेशन. हम इनोवेशन नहीं करते. क्यों? क्योंकि हम उसका प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं सोचते हैं. The thing is that is good one way कि भाई humanity की growth के लिए and all that. But the thing is then somebody else takes benefit over it. Why not I protect my idea? I'm more of a mindset कि it should be for everyone. I can give it free. But the thing is that it won't be, the other person won't be able to have financial benefit out of it. I hope we are getting my point. So probably it would be more social when you protect your idea commercially, give it in the open. Okay? You don't want to have any benefits out of it, give it in the open. But do protect your ideas, do protect what you do. Okay? So this, आपने देख लिया होगा कि technically these innovations could be mechanical, chemical, biological processes and whatever. So two type of, it would be, one is process and another one is process. Okay? So what is the process of innovation and why it is important? कि सिर्फ आइडिया होने से और उसको बिना रिसर्च के किए जाने से what could be the harm? आइडिया का अच्छे से एग्जीक्यूट होना is very important. Want it to become an innovation. उसका रीजन बताता हूँ कि जो हमारे जुगाड़ है ना, जो हम करते हैं, तो जुगाड़ इज टेम्परेरी मैनेजमेंट. आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, बट उस जुगाड़ के लिए कोई दूसरा आदमी आपको प्रोबेबली पे नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इट इज रॉ. बट द थिंग इज जुगाड़ हैज अ पोटेंशियल टू बिकम एन इनोवेशन. सो दैट मींस आपने रॉ कुछ किया, पॉलिश इट, फिगर आउट की प्रॉब्लम क्या है, bring it innovative component to it, think different and make that solution an innovation. That means jugaad is a solution and extensively, like India में it works extensively. हर कोई करता है, हम में से हर कोई करता है. Probably हमको पता भी नहीं होता कि हमने कुछ नया ढूंढ दिया है, क्योंकि हमने कुछ पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं. तो हर कोई करता है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बस हम उसको उस तरफ लेके नहीं जाते. So आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है प्रोबेबली वो किसी दूसरे की प्रॉब्लम भी हो सकती है. ओनली थिंग इज वी थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि अगर मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैंने ढूंढी है तो व्हाई नॉट गिव इट टू समबडी एल्स टू. सो इफ यू आर एबल टू डू दैट यू कैन सेट योर प्राइस. यू वांट टू गिव इट फ्री, दैट इज योर चॉइस, बट यू कैन हैव बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. सो गो फॉर इट. ओके? So as Pankaj has also elaborated on all these, so there are different incentives associated with patents. It gives you protection for 70 to 20 years. That means us okay. So whatever. So probably you all have seen this slide over here कि किस तरह से आप commercial benefits ले सकते हैं. But my emphasis is again and again and again, we have to come out of silos. We have to drop this mindset कि कुछ elite mind जिसका दिमाग कुछ different तरह का होता है वही innovator होता है. We have to drop this mindset. Okay? It is all in us. It is our inhibition. So please come out of it. Okay? जरूरी नहीं है कि सारी innovation successful business बने. There are examples, but there is no harm in trying. What is the critical component? हम कर सकते हैं. There are 4 components probably we need to look at. What would be the product? होगा कैसे? कौन करेगा और किस तरीके से करेगा? If you are able to answer this, that is the research you need. It needs to associate with your innovative product.
Okay, so here is something promising for the new generation. अभी तक ये माना जाता था कि जो इंडस्ट्री अभी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है वही अच्छा करते हैं, but this is the new information. This is what is new. 5 times new startups, that means जिनका नया आइडिया है, जिनका वो, they could be more successful than already existing experts. जिनको लगता है कि हम एक्सपर्ट्स हैं, उनसे नए आइडिया के साथ काम करने वाले 5 गुना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. ओके, at the same time 85% of the ideas or innovative ideas, they don't turn into a commercial perspective, so that is there, but try करने में क्या जाता है, what is the harm? There are policies, there are facilities. With the paucity of time, you can go to SME2 TBIC. It's a website. You search in the Google SME2 TBIC. You will figure out there are n number of opportunities. आपके पास आइडिया प्रोटोटाइप बनाना है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू अप टू 10 lakhs. No question asked. Only thing is idea need to have potential. Okay, bring in the idea, get 10 lakhs. It comes to your personal account if you are able to satisfy the team. Try to make it a reality, and there is no limit. It goes to any level. Okay. So time to conclude. I have here put together some interesting ideas and probably with आप ये देख सकते हो कि इतना सिंपल होते हुए कि आदमी को अपनी नूडल ठंडी करनी है तो उसने पंखा लगा लिया, अपने पोर्टेबल पंखा, you put it to your chopsticks and अपनी नूडल ठंडी कर सकते हो. To the level somebody has to kill the bug, तो चप्पल में एक स्टिक लगा लिया कि बग को मारना इजी है. To the extreme levels. Okay, and I would want to give a message that don't limit yourself to a job, think innovative, and this was one of the projects I want to discuss. So I'll conclude my talk with this one, that looking forward to the next innovation from you. Okay, so here's the what change is wrong. So, any questions? I usually ask that if anybody has any questions. Thank you. Thank you, sir, for motivating young minds through your informational as well as motivational talk. May I call upon the convener of the workshop, Dr. Jagdish Singh, to kindly present a token of appreciation to Dr. Savarkar Sharma. Sir, please. बचे एक भाई Now I hand over the stage to Kiran ma'am for the further proceeding. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Nisha. A very good afternoon to everyone. The purpose of today's workshop is to promote out-of-box thinking and development of out-of-box thinking and development of innovative ideas. Most people don't suffer from a lack of ideas. Most just simply don't know how to choose the right path to pursue. There comes the role of innovators. It's an innovator's guide which builds a system capable of shepherding ideas worth pursuing. They foster connection between creators and their ideas. The innovators can share their successes and value of lessons learned and socialize their stories among the people. We also have among us this afternoon the young student innovators who, with their excellence and hard work, have made us proud and have become an inspiration for our youth. Good things comes to people who wait, but better things come to those who go out and get them. With these words, let me introduce to all our first student innovator, speaker of the workshop, Master Harmanjot Singh. Firstly, I request Professor Rakesh Gupta to welcome Master Harmanjot with the flower bouquet.
Okay. There is a minor change in the plan. He has been the principal of various colleges of Kashmir Division, the nodal principal Kashmir Division, Dean Academic Affairs Cluster University of Kashmir, and is amongst us as our worthy Director Colleges. May I call upon our esteemed Professor M.Y. Pirzada to share his valuable thoughts with us this afternoon. And I request Principal Secretary Scott. Principal of the college, faculty of the college, our keynote speakers, Additional Secretary to Higher Education Department, Rana Saab, and the students of the college as well as those who have come from the other colleges. A very good afternoon to all of you. I am slightly hard pressed, so I requested Ravinderji that kindly allow me to have some small idea of sharing with my students. Because today is a Friday and we have to proceed for the prayers also in the afternoon. So, first of all, let me be very clear that we are really proud to have our two keynote speakers who explicitly gave you a thought as what is the objective of today's this convention or the conference. आज की जो मीटिंग है मतलब हमारे बच्चों का इम्पोर्टेंट है कि दे आर द ड्राइवर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप अपने घरों में आप अपनी सराउंडिंग्स में कुछ न कुछ इनोवेट करते ही रहते हैं। उस आइडिया को आपकी उस थॉट प्रोसेस को शेप देने के लिए हमने अक्रॉस यूटी JNK में मेन कॉलेजेस जो है, जम्मू के कॉलेज है, कुटवा के कॉलेज है, जोड़ा भद्रवा के कॉलेज है, उधमपुर के कॉलेज है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कॉलेज को हमने चुना है जहां पर हम आपको एक ऐसा इकोसिस्टम देंगे जिसमें आप अपने उस आइडिया को लाएं और उस आइडिया को पूरा शेप देने के लिए आपको वहां पर एक्सपर्ट्स उन एक्सपर्ट्स के साथ अपने आइडिया शेयर करोगे और उससे हम अल्टीमेटली जितने अच्छे फ्रूटफुल आइडियाज होंगे उनको क्रिस्टलाइज करेंगे तो वो आपका एक इनोवेशन बन सकता है। जैसे सारे सचिव कहा कि इनोवेशन कोई बड़ी बात नहीं, किसी चीज को थोड़ा पॉलिश करो। ये इनोवेशन मतलब जैसे आपने गैलीलियो ने इन्वेंशन डिस्कवरी किया, किसी ने इन्वेंशन किया, वो चीजें ये नहीं है, ये इनोवेशन है। ऑलरेडी कोई चीज है उसको आप मोर प्रोडक्टिव मोर यूजफुल बनाएंगे, वो आपका इनोवेशन। तो वो चाहते हैं कि आपका जो इनोवेटिव माइंड है उसमें जो थॉट्स चल रहे हैं ये ऐसे होना चाहिए, ये जो आपका आइडिया ऐसे होना चाहिए जिससे मुझे ये फायदा आ रहा है, इसी आइडिया को हम लेना चाहिए और उस आइडिया को हम यहाँ पर नर्चर करेंगे। कहाँ पर? GGM साइंस कॉलेज में, कुटवा कॉलेज में, किसी और कॉलेज में। तो वहां पर अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात की हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्पीकर ने कि अगर रविंद्र जी चाहे तो एक कोलैबोरेशन कि कैसे सेटअप करेंगे यहाँ पर वो लैब, वो इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें आपका आइडिया उसको लिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। इफ इट कैन अल्टीमेटली लीड टू एंटरप्राइज, अल्टीमेटली इसका कोई फाइनेंशियल इशू हो, वो भी आपको एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे। उस सिलसिले में हायर एजुकेशन ने क्या किया, जो लोग थ्रू आउट कंट्री काम कर रहे हैं, ये जो ज्ञान का नाम आपने सुना, गुजरात इनोवेशन वाले जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको हमने ऑन बोर्ड लिया। क्यों? आपका जो आइडिया, उस आइडिया को अल्टीमेटली हमें उसे नर्चर करना है। नर्चर करने के बाद उसको सेकंड स्टेज पर लेना है, कहीं IPR यानी जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, तो फिर आपको वही मिलाएंगे किसी ऐसे आदमी के साथ जो आपके आइडिया को पूरे को शेप देगा। फिर शेप देने के बाद
एंड जब पेटेंट शेटेंट हासिल करें आप उसको मार्केटिंग, जैसे उन्होंने कहा, अगर वो मार्केटिंग चीज है तो उसका पैसा जो आएगा वो आपका पेटेंट रहेगा, आपका उसको होल्ड रहेगा, आप उसको मेजर फायदा ले सकते हैं। तो वो वाला इकोसिस्टम शुरू कर रहे हैं हम अपने कॉलेज में। हायर एजुकेशन का एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जो देयर आर मेनी इनिशिएटिव, जैसे आपने रविंद्र जी ने कहा, एक अच्छा खासा इनिशिएटिव ये है जिसको हम पॉपुलराइज करें। आज हम पॉपुलराइज इसको करें कि मे बी आप यहाँ पर 200 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 5 ही बच्चे अगर किसी अच्छे 5 आइडिया को लेकर आ जाएंगे तो हमारी लेवल जो है, अभी कह रहे थे कि हम 48 पर है, हम 30 पर आए, 5 आइडिया लेकर हम इस साल मे बी 20 पर आ जाए। सो इन नेक्स्ट 2-3-4 years मे बी विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो कैसे हो जाए? जब हम ग्रास रूट्स पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे ये जो ज्ञान वाले गांव-गांव जाते थे, लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब हम इनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो इनके लिए काम थोड़ा सा आसान हो गया। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी जगह काम कर रही है, हमारी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी अपनी जगह काम कर रही है, हम इनको भी अपने इस आइडिया में, अपने इस इनिशिएटिव में जुड़ना चाहते हैं। तो जहां कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव काम होता है वहां रिजल्ट ज्यादा बेटर आते हैं। Maybe they are thinking in one direction, we'll think in other. जब सारे डायरेक्शन इकट्ठी मिल जाएगी तो मान लो सभी दरिया मिलकर एक समुद्र में जाकर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज नजर आ जाएगी, that can change the landscape of innovation in the country. तो यही इनोवेशन जो आपके, ये किसी के जैसे उन्होंने यहाँ वो आपको भी ये छोटे बच्चे हमारे कार से COVID-19, because you have 1.3 billion population of the country. And there are millions of problems, and those millions of problems are your opportunities. So उन सभी को, जैसे कोविड एक प्रॉब्लम लेकर आया, थ्रू वर्ल्ड लोगों ने इनोवेशन जुड़े, ठीक है ना। हमारे ये एक छोटा बच्चा 10th में पढ़ रहा है, तो इसने इनोवेट किया, जनाब मैं कैसे, जैसे आरोग्य सेतु है, ऐसे में कोई एप्लीकेशन बनाऊं ताकि मैं कनेक्ट रहूं। तो एक आइडिया आया बिकॉज ऑफ द चेंज, because of the problem. So problems are actually opportunities, and our colleges will become the focus where your ideas, where you can use those problems as opportunities, and once opportunities are converted into, then we say that bigger ideas, तो वो वाली चीजें जो है अल्टीमेटली हम सबको फायदा देंगे। इस कॉलेज का नहीं, इस यूटी का नाम लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा जखीरा जो है, जो कॉलेजों में नहीं, जो हमारी एज ग्रुप है, इसको कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिवीजन, वो ये है कि हमारी यूटी में 35 years एज ग्रुप में, अप टू 35 years एज ग्रुप में हमें 70% पॉपुलेशन है। दैट मीन्स जो सोचने वाले, क्विक, जिनके रिस्पॉन्स है, जिनके पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जब एज पे ऊपर चले जाते हैं तो बाकी प्रॉब्लम्स आपको प्रेस कर रहे हैं। सो वी हैव a bigger human resource that can definitely help us in getting this country uplifted in the area of innovation and तो सबसे बड़ी बात है, इससे आप दूसरा क्या, अगर ये मार्केटेबल बन गया, अगर एक एंटरप्राइज बन गया, तो आप लोगों को जॉब दे रहे हैं, आप एक जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। जब आप एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमें यकीन है, बिकॉज इन हायर एजुकेशन व्हाट वी सी a ray of hope that we can turn our these colleges, these higher education institutions as centers of entrepreneurs, as centers where entrepreneurs will come, where innovators will come, where we can also provide skill training to the students so that they are self-employable, and the present scenario of what we call as this unemployment changes, and our future will be a better future for our progeny. तो ये हमारे आइडियाज है जो हम हायर एजुकेशन से ले रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है हमें जरूर मदद करेंगे जो आगे गए हैं, जिन्होंने कुछ पेटेंट्स हासिल किए हैं, जिन्हें कुछ रिसर्च किया है, और साथ साथ में हम ज्ञान का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमसे जुड़े हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। और जो सेकंड हाफ ऑफ दिस प्रोग्राम, तो उसमें आपके जो जितने भी आइडियाज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद वो देखेंगे कि आपका
कौन सा वाला आइडिया जिसको हम आगे ले सकते हैं, टू द लेवल ऑफ पेटेंट, आईआरपी फाइल करना, बाकी आगे उसको इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल बनाना, वो वाले काम सेकंड पार्ट में हो जाएंगे। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस स्मॉल टाइम टू शेयर माय थॉट प्रोसेस विद यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable words. Our esteemed chief guest has spared his valuable time and graced the occasion. May I request our worthy principal, sir, to kindly present a memento to Professor Pirzada as a token of our heartfelt gratitude. Please, sir. Now let me introduce all our first student innovative speaker of the workshop, Master Harmanjot Singh. Firstly, I request Professor Jagjit Singh, leader of today's workshop, to welcome Master Harmanjot with a flower. Let me give you a brief introduction of Harmanjot. Harmanjot was awarded with Prime Minister's Rashtriya Bal Puraskar in 2021 under the innovation category. This app has also been selected for prestigious Silicon Valley Code of Honor certificate and henceforth got published by Google in the Google Play Store. He has also achieved numerous one rank in various international Olympiads and competitions. Harmanjot is an epitome of child prodigy who is passionate and enthusiastic about applying computer programming in STEM education. Thus has deep interest in computer science and mathematics. He is an outstanding coder, creative thinker, and a keen learner and has won many accolades for his scholastic achievements. He is one of the youngest certified game developers as well as Android iOS app developer. He has won numerous medals in international, national, zonal level Olympiads. He is also an excellent debater and a consistent winner in state level. कोली टीवी इन्होंने उल्टी उल्टी मारी इन्नी इन्नी है उल्टी उल्टी मारी नहीं भी बुरी हालत होंगी फिर सफाई करना है सोचदा दो चार बार तुमने का फिर लग रहे इधर देखो ने उल्टी मारी थी It's not about ideas. It's about making ideas happen. It's learning it's a great honor, privilege, and pleasure. changes, we stay the same. We don't grow. We don't evolve. We don't get better. Not for you and not for the world. We need positive change. We need new ideas. We need progress. We need to be innovative. Innovation is the specific tool of entrepreneurs. In the highly competitive world that we live in, innovative ideas are what will separate you from the rest. In order to create an outstanding product, strong brand, or to build your customer network, you need to be innovative so that you can be the job provider, not the job seeker. And here, science and technology plays an important role for the progress and development. In the present times, when the world is totally pivoted on science and IT, it is pertinent to think and plan about the future. A future in which the children of the present shall be the leaders of tomorrow. Innovation is not natural. We all have our opinions and ideas. Hence, innovation is a value-added novelty. In my opinion, friends, there are two types of innovation. Type 1, identifying a
better alternative solution to address an existing problem. And type 2, to redefine the existing problem into a more meaningful one with innovation and creativity. Well, here I want to mention some skills and qualities that go hand in hand with innovation and creativity. Number 1, the ability to adapt and be resourceful in unexpected situations. Like I did and tried to be resourceful, to do some resourceful work in the Corona lockdown. Number 2, the enthusiasm to try new things and gain new skills. Number 3, creative approach to every problem and to be problem solving. Number 4, the ability to think imaginatively but also strategically and practically. After all, it doesn't matter how creative an idea is if it isn't realistic commercially. At last, I can share my own 6 ways to relocate your creative muscles. Number 1, look for something to solve. Number 2, take visual notes. Number 3, collect ideas that fascinate you. Number 4, research randomly. Number 5, give yourself time. And number 6, that is the very important point, try it, and try it. To end with, I would like to say that whatever you do, work with passion, perseverance, and purpose. As stated by Einstein, every person is an genius. So never stop learning. For when we stop learning, we stop work. For me as well, this prestigious Bharati Puraskar is just the beginning of my learning. Thank you for your kind attention. Have a nice day. So I would like to tell why I got the Bharati Puraskar. I received the Bharati Puraskar for the innovation category. Basically, in the lockdown time, I had a lot of idle time. Even I think everybody had a lot of idle time. So why don't we do some progressive work, some productive work at that time? So I started learning new skills on computer technology, various coding languages, and I got some curiosity that why should we work with our skills? Why should we do something for the social welfare? I discussed with my mother about some ideas about creating some apps for the social welfare, and the most important topic came up as a global concern, which is women's safety. In the present times, women's safety has become a prime concern in the whole world. So it's important to solve that problem. So I started developing an app named Raksha Women's Safety App. The app has several features for the safety of the women. For example, if you are in an area which you don't know and you want to go to some police station and you feel that you need some help, you're not safe, you can find the nearby police stations in that area, call them, see the directions on the Google map there itself, and if you're in immediate need of the help from your known ones and family, then you can instantly message them using the SMS. Here I've tried to use the SMS because not always you have the internet connection at every area. So if we use SMS, the message will be sent instantly to your family members. And this is all about the app. The app is now published on the Google Play Store, so please install it. If you need some help during some time when you're not safe. In addition to this, I've won numerous medallions and achievements at international Olympiads. Pertinent to mention, international and one in National Cyber Olympiad and International Mathematics Olympiad and International and International Science Olympiad. So, thank you everyone for listening. Thank you, Harman, for your inspiring word.
It will definitely inspire our students to work hard in their field of interest. It gives me immense pleasure to introduce our second student innovator speaker of the workshop, Mr. Omkar Singh. Omkar is a theoretical researcher, web developer, human rights activist, and UN peacekeeping goodwill ambassador for Southeast Asia. He is the recipient of 80 plus national and international awards as of now. To name a few, recipient of 2020 Rashtriya Bal Puraskar from President of India, recipient of US President Education Award from President of United States, recipient of Vigor Unsung Heroes Award International 2020, featured in top 106 of the world with a rank of 47, honorary doctorate in international diplomacy and human rights from European Institute of Roma Studies. He is the CEO of Paradox Sonic Space Research Agency, founder and managing director of Batra Technologies International, ambassador for Southeast Asia at UN Peacekeeping Force Council, senior director of Swiss Space Tourism India, international director of African Space Research Organization, Government of Ethiopia. He is the developer of 90 plus websites and which includes United Nations Peacekeeping website, African Space Research Organization, Government of Ethiopia, World Humanity Commission, etc. His African Space Research Organization website was termed as the best ever website of the Ethiopian government agency in history. With these words of appreciation, now I call upon Mr. On the stage, Mr. Omkar to share his entrepreneurship success story with our audience. Innovation. Innovation is more important than knowledge. Knowledge is limited. Innovation and creativity encircles the world. Good afternoon, everyone. Please accept my warmest greetings. Honorable guests, principals, invitees, attendees, and my dear fellow mates and fellow students of the college. I am Omkar Singh and I am the Chief Executive Officer of the Paradox Sonic Space Research Agency. I am a researcher, web developer, and the author of a nationally recognized book, a theoretical book, When the Time Stops. I am the recipient of 2020 Rashtriya Bal Puraskar. So now I would start my speech by not wasting much of your time, and I won't introduce myself. So as we all are gathered today to be a part of workshop cum awareness campaign on innovation, incubation, and training IIT 2021 GGM Science College, Gandhinagar, Jammu. So first of all, we should know the importance of innovation and creativity in our society. Innovation is the creation, development, and implementation of a new product, process, or service with the aim of improving efficiency, effectiveness, or competitive advantage. It increases one's chances to react to changes and discover new opportunities. It can also help foster competitive advantage as it allows you to build better products and services for your customers and consumers. Now, when I use this term customers or consumers, that clearly reflects that I am not just talking about innovation, not a general innovation or creativity, but I am referring to something slightly different. It's similar but slightly different. Actually, I am talking about innovative entrepreneurship. Innovative entrepreneurship. Yes, you heard it right. An innovative entrepreneur is a person who discovers totally new things. An innovative owner is a person who creates innovative products and services. An innovator entrepreneur is a person who innovates the business processes in his business. An innovator person is a person who is not afraid to take any kind of risk. Innovation plays a vital role in entrepreneurship and startups. Innovation is important in entrepreneurship. In the highly competitive world that we live in, innovative ideas are what will separate us from others. In order to create an outstanding product
strong brand and build your customer network, you need to innovate. Always think something creative. As in this 2021, the IIT 2021, the Innovation, Incubation and Training, this 3-month program, jointly organized by the Higher Education Department, Government of Jammu and Kashmir, and GGM, the Grassroots Innovation Augmentation Network. A full mentorship support would be provided to grassroots innovators, students from various colleges of GNK, including the development of prototype, protection of innovators' intellectual property, and then commercializing the particular innovation. It is something new for us as a person, as a citizen of GNK and India. But outside India or within India, except Jammu and Kashmir or some remote areas, it is really common that an innovation is commercialized and its IPs are protected. But in India, and especially GNK, due to lack of coordination between the innovators, entrepreneurs, and a kind of mentorship support, most grassroots innovations which can be commercialized end up being unsung, or sometimes very rarely it gets commercialized, but by certain businessmen. But the real innovator behind that particular innovation gets no credit and remains unsung for life. This is really a problem that you should focus upon as an innovator, as an entrepreneur. Now, what the IIT 2020 is all about, as I already stated, that GGM in collaboration with HED GNK has set up various incubation centers in various colleges of IUT. It is a 3-month long program, training workshop, where full mentorship support will be provided to the innovator, development of prototypes, IP rights, and ends up being commercialized that particular innovation. It's really important to understand and break the taboo of entrepreneurship in GNK. Let's become a job creator instead of a job seeker. I believe that innovation comes from the problem. If we are from Jammu, we know the basic problem, that is the slow internet speed, 2G internet. So as an innovator, we should try to create something through which we can have our online classes even in 2G network in low speed. This is called a real innovation. We have less resources. Instead of crying out that we don't have 4G, we don't have high speed, can't we do something that in 2G, it is possible to have online classes without any fluctuation of food? This is called a real innovation, and we should think upon it. Okay, so there's an interesting story which I think you all should listen to. So once there was a wealthy and curious king. The king had a huge rock, a boulder, which he placed in the middle of the road. So then he did hide nearby to see if anyone would try to remove that rock, or he would just go around it. So the first people to pass by from that road was some king's wealthiest merchants and some of his ministers. Rather than moving it, they simply walked around it. Okay. And a few loudly blamed the king for not maintaining the roads and having a boulder placed in the road. So finally, a peasant came along. His arms were full of vegetables. So when he got near the boulder, rather than simply walking around it, what he did is the peasant pulled down his load and tried to remove the stone to the side of the road. It took really a lot of effort, but finally he succeeded. After that, the peasant, when he was gathering up his load and he was ready to go on his way, he saw a purse lying in the road near the rock. So where the boulder has been. So the peasant opened the purse. The purse was stuffed full of gold coins and a note from king. The king note says the purse gold was a reward for moving the boulder from the road. So the king showed the peasant, but many of us never understand that every obstacle presents an opportunity to improve our condition. As Professor P. Zada, they already said that during COVID time, I developed the COVID kit Jammu. It was an obstacle because due to the lockdown, it was a difficulty, and I created an opportunity. We have Harmanjot, he created Raksha during the COVID-19 lockdown. So every obstacle has some opportunity, but we people don't understand, and we got suppressed. What is this COVID-19 lockdown? But every obstacle have opportunity, and it's really a quite heart-touching story, and it's
really inspires me a lot that every obstacle presents an opportunity. So in the ending of my speech, I would like to remind all the attendees that this 3-month program is an opportunity for you that you should grab. And I am really thankful to the GGM network for organizing this program in our UT, because it was indeed very important this time that when the new education policy is about to implement, so we should have something innovative in our UT as well. So now soon the Paradoxonic Space Research Agency, which is a newly initiated project, a student-based space research agency, we are about to coordinate with GGM at GGM and would soon launch the International Space Education Center in Jammu itself. And that would be the first ever international space center in India, where more than 5 space agencies from all around the world, Switzerland, India, Africa, US and Australia, they would have their coordination centers in the International Space Education Center, and students of Jammu, not just Jammu and Kashmir, but the whole India would come to JNK to have the exposure of international space education. And how amazing would it be when that space education center, that international space education center, would be established in our own state, in our own UP, Jammu and Kashmir. And I hope that you were not getting bored with my speech. And I truly appreciate the GGM Science College, GGM JNK, the Higher Education Department, Shri Talat Pravez Rohela ji, the Commissioner Secretary, Dr. Ravinder Dikku ji, the Principal, and Syed Nadeem ji from the GGM Network for inviting me in this program. I truly appreciate it, and I am truly humbled. Thanks, and always do remember one thing, that success can be delayed, but it cannot be denied. Thank you so much. Thank you, Omkar, so much. This was indeed an impressive speech. May I call upon stage the organizing secretary of today's workshop, Dr. Rahul Kher, to kindly step forward and facilitate the deserving, felicitate the innovators, and also Dr. Jagjit Singh, convener of today's workshop. Mr. Harmanjot Singh. Mr. Omkar Singh. Innovation is a process of pure ideation. So I call upon the stage Mr. Saeed Nadeem, Incubation Manager, Gujarat Grassroots Innovation Organization for ideation.
Respected Principal Sir, respected Rana Sir, Pankaj Ji, Savarkar Ji, and dear students, this session is meant for you. Please listen carefully. Let be it an interactive session. Dear students, be folks, and let be a very interactive session. Actually, me and my colleagues were here. We are from the GGM industry. GGM is India's, not only India's first technology business incubator for the grassroots innovations. Today's agenda is like 2-3 things, like about the organization. We'll discuss about the innovation value chain. Dr. Pankaj and Savarkar already told about the innovations. Then how we involve the students in this innovation value chain process. As I told that grassroots innovation is the India's and world's first technology business incubator for the grassroots innovations. And we actually work on this golden triangle. Why we call it the golden triangle? We scout, we identify innovation from formal sector and from informal sector. Informal sectors, the innovation from those people who have never been to school. And then we put the investment on those innovations, invest in the form of intellectual property, like material, like finance. Then we change that investment into enterprise. Our main agenda is from mind to market. For example, today, yesterday we received a lot of students. Some students thought about the women tribe. Some students thought about the garbage problem. Some students thought about the network problem. Some students thought about the diapers, the rashes, rashes due to the diaper. That means students already have started thinking about the problems. Actually, how we do our work is like a lightning started. That's identify, develop, and support and promote. Actually, we believe that the unmet social needs are as the drivers of the innovation. This is our primary objective and agenda of this 3-month training program. First thing is that we will try to identify unmet social needs with the help of students. Then these unmet social needs may lead to the innovations, but they need some flourishing, maybe some developing proof of concepts and investments. We will do in these 3 months. Savarkar sir and Dr. Pankaj already told about the innovation. I will not go into the what are the innovation, but I will tell about something about the innovation value chain. The first thing is that you have to identify unmet social need. Any one of you, can you define the unmet social need, please? Any student? Let it be only but 10 minutes, not more than 10 minutes. I know you are already, we have to go for the lunch and then ideation. Any student, what's unmet social need? Unmet social need is that we have unmet need maybe in the industry, unmet need maybe in the community, unmet need maybe in the society. But we have to sense that unmet need. And those are, when we think about the unmet needs, maybe we'll provide some sort of solution. That solution is the innovation, but it's in the mind that our team, our organization will bring that idea from your mind to the market. We will act as a bridge between mind and the market. And from that, in the bridge level, we can grow all of the different kinds of things like finance, like incubation support, like mentoring support. Then this is the first thing is the unmet social need, the solution mapping. You have to do the solution mapping. Whether this solution is already existing in the market, if it's not existing in the market, that is a novel solution. If it is existing in the market, then you have to modify it. You have to do something changes. Then it's a novel solution. Then market scoping. That you have to find it's applicable for the market or not. Then you have to do these 3 things. When we do the ideation, you have to focus on these 3 things. See, can you see these 3 pictures? Can you see this?
First thing is that one man is drinking the water. It's a hand pump, simple hand pump. But he feel that it has some problem. Anyone of you can identify some problem with this first hand pump? Please. Anything? कुछ भी बोला? Anyone? Yes, please. जरा माइक दीजिए. नहीं, फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम आपको? हाउ? जरा माइक पे बोलिए प्लीज. Okay, anyone? He has identified two problems. पहले बच्चे से, फिर फैकल्टी से. हाँ? वाटर वेस्ट हो रहा है. तो वाटर वेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ? हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, apart from this thing, your own solution. What will be your own solution? हाँ. हाँ. ओके. हाँ. एक चैनल जैसा. That is a wonderful idea. तो क्योंकि we have vegetable gardens हमारे घर में होते हैं, तो एक चैनल हम बना सकते हैं. तो I think it's a small sustainable model. जैसे कि एक इनोवेटर सिस्टम छोटा सा इसने चेंज किया कि it put also two taps, एक बड़ा टैप और दूसरा टैप, दो लोग साथ में पानी पी सकते हैं. एंड थर्ड थिंग, तो उसने छोटा सा रिजर्व बना जहाँ पे जो वेस्ट पानी होता है वो उसमें जमा होता है. तो वेस्टेज ऑफ वाटर वाज वन प्रॉब्लम. Then more than one person cannot drink the water and then unable to control the flow of water. So ये छोटा सा. Then we have to think our minor problems. Then we get the solution. That's the innovation. See, there are some pictures. First picture, second, third, fourth, fifth. You have to find one unmet need in these pictures. Anyone? First picture. So, can you explain what is this first picture? Any female student here? What is the first picture? Please. It's not the first water. They are carrying wood box. जंगल में जाना पड़ता है. Actually, when we were in Greece, तो वहाँ पे हमने देखा था. तो जो बच्चियां होती है वो सुबह जाती हैं जंगल में, तो फिर जंगल से वो लगे अपने पीठ पे लाते हैं, तो दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम. नेक्स्ट पेन हो जाता है. दैट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद दिस. सेकंड थिंग इज दैट walnut tree. हैव यू एवर सीन हाउ टू हार्वेस्ट द walnuts? कश्मीर में कैसे करते हैं? बाय बीटिंग अप ब्रांचेस. मे बी जब पहला आदमी यहाँ पे आके जब walnut tree बना था कश्मीर में, तो सेम प्रोसेस, नथिंग हैज बीन चेंज्ड, बाय बीटिंग अप ब्रांच. तो इट्स अनमेट नीड. कितनी डेथ्स होती है? देन दिस पैडी सैपलिंग्स. तो जो हमारी बच्चा यहाँ पे बैठे, किसी ने पैडी सैपलिंग्स की है आज तक? एनीवन? किसी ने यहाँ पे की पैडी सैपलिंग? एनीवन? Actually, when we do the paddy sapling, it's first thing is we have to bend in a very awkward position. अब मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बताओ, जोर से बताओ. अच्छा, नहीं, जब हम दान को लगाते हैं ना जमीन में, तो क्या क्या दिक्कतें उस वक्त होती है? अच्छा, तो आपने कभी लगाया है खुद? तो बैक पेन कभी बैक स्ट्रेन नहीं हुआ है? अच्छा, नहीं, जब पैडी सप्लिन लगाते हैं ना ऐसे करके है ना, तो बैक स्ट्रेन नहीं होता है.
बैक पे नहीं होता है, नहीं लगाने के लिए या तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। तो इस जो हमारे सोसाइटी में अनमेट नीड्स, इनको हम अनमेट नीड्स कहते हैं, तो इनके बारे में सोचना है, दैट विल बी अ सॉल्यूशन, दैट विल बी अ नॉवल सॉल्यूशन। ये बनाए हमने तो बनाए जवानी के लिए। I will not go to innovation process. Let us think about these four pictures. Dear students, this picture is from the India, cobbler, मोची जिसको हम कहते हैं। बेटा देख लीजिए, सब्जार। These are four pictures: cobbler from India, cobbler from the Kabul, cobbler from the China, and cobbler from the Korea. ये चार पिक्चर आपको दिख रहे हैं। तो क्या डिफरेंट है चार पिक्चर में? What do you feel the difference? Anyone from faculty? जुबैर साहब कहाँ गए? अशफाक साहब, सर आप कुछ करना चाहते हैं? आप इन पिक्चर में से कुछ आप निकाल दीजिए। Actually, if you go to the cobbler, you cannot find the some modular equipments. जब हम बाहर भी जाएंगे ना तो बहुत सारे cobbler हमें मिलेंगे, तो we cannot find the unique equipments. So same is with India, same is with the cobbler, same but different with the China and different with the Korea. I was in the Korea for at least for 1 year. But if you find the things with the cobbler, छोटी सी बात है ना, cobbler के पास skill और cobbler के पास techniques, but it makes sense. हमें बॉटम ऑफ पिरामिड पे जब हम इन लोगों के बारे में इनोवेशन सोचेंगे, then country will go. We have to start from the bottom of the pyramid. We have to give the techniques and technologies to the bottom of the pyramid. Then we can grow. How we can do innovations? I will not go into the innovation process. Just say बिल्कुल सर ने बिल्कुल के बारे में बताया, but we can think innovation from the nature. अब nature को यूज करके, because naturally itself is a laboratory. आप कुछ भी देख के कर सकते हो। जैसे सर ने वो एग्जांपल दी कि 1948 में उसने कैसे बिल्कुल का कंसेप्ट लाया था। You can see submarine. It comes from the nature. You can cat eye, एक डिवाइस आता है कि अगर आंखों पे रोशनी पड़ती है ना रात की, तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव। तो किसी ने एक इंजीनियर ने ये सोचा कि जो वाइल्ड कैट्स होते हैं ना, लायन होता है, एक स्पीशीज होती है, तो उनकी आंखें भी रिफ्लेक्ट करती है। तो उसको देख के they have invented this kind of device, cat eye. तो we can use the nature. हम नेचर को देख के इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे हमने भी मैंने भी डक को बचपन से देखा है, लेकिन I never thought about कि इसमें कोई इनोवेशन निकल सकती है। तो you can see the web feeds से इनोवेशन बन गई है। रिसेंट ये जो बाहर काफी टेम्परेचर होता है तो अंदर काफी वो टेम्परेचर को डाउन करता है। तो नाउ अब बिल्डिंग इस पे बन रही है। इवन माय फ्रेंड सोनम, जब मैं लद्दाख में था तो सोनम हैज एस्टैब्लिश्ड सम हाउसेस लाइक दैट कि अगर बाहर टेम्परेचर गिरेगा लेकिन अंदर मेंटेन रहेगा। दैट मींस वी हैव टू थिंक अबाउट द नेचुरल थिंग्स, देन वी कैन मेक सम इनोवेशंस। या वी कैन डू इन अपोजिट वे। जैसे कि यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर, हमारे फीट की शक्ल में किसी ने एक जूता बना लिया। We can do in a change in size, subtraction करके। पहले हमारे पास लैपटॉप बहुत बड़ा होता था, now in a very small size, fridge in a very small size. We can do like subtraction. पहले हमारे पास iron होता था with the card, now with the cardless. So that means we can do with addition, subtraction, and we can do the innovation. Here are some examples. Mushtaq Ahmad Dar, he never been to the school, but he had developed 3 technologies और उसके नाम पे पेटेंट भी अवार्ड हुआ है। Like we can climb a pole up to the 100 feet. Here हमने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था with Ahmedabad Innotex. He got the royalty of 10 lakhs. तो एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है, he got the royalty of 10 lakhs. Not only this, he was with in the Padman movie. जब Padman movie launch हुई थी, the Padman movie was made with our consent, जो उसमें वो डायपर का concept था. Then he was a guest of President. He received 3 times President Award. तो जब वो बच्चे कर सकते हैं, we have formal education, we have to think about these things.
I will give an interesting example here. ठीक है, एक बच्चे ने सोचा कि जब हम क्लासरूम में होते हैं ना, फैकल्टीज को देख सकते हैं, तो जो बैक बेंचर्स होते हैं तो टीचर उनको नहीं देख पाता है, तो उसने एक आइडिया था कि मैं एक मिरर को बोर्ड पे, तो हम पीछे बच्चे देख सकते हैं. These are the interesting ideas. Now we have to do activity after lunch break. This is the activity. हम आपको एक फॉर्म देंगे. तो फर्स्ट जो मैंने आपको बोला कि हाउ टू आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स, आप ग्रुप में बैठ के, डिपेंड बैठ के आपको सोचना है अनमेट नीड के बारे में. कोई भी अनमेट नीड, कल्चर, विद द ट्रांसपोर्ट, विद द फॉरेस्ट्री, विद द एलोपैथिक, एनीथिंग जो आपको लगे कि इसमें हमें कुछ करना चाहिए. देन वी कैन मेक ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स. पहले इंडिपेंडेंट लिखना है, तो देन आप बैठ के विद 5 स्टूडेंट्स आप 3 आपको बेस्ट निकालने पड़ेंगे, तो वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे आफ्टर द लंच. देन सॉल्यूशन मैपिंग, तो आपको क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक छोटा सा आपको प्रेयर आर्ट, आप छोटा सा एक प्रेयर आर्ट करना पड़ेगा कि गूगल में देख के या आपस में डिस्कशन करके कि ये नॉवल है या नहीं है. अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, तो इसमें मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्कोप ऑफ डिफ्यूजन में हम क्या कर सकते हैं. और इसके अलावा कोई बच्चा अगर इंडिविजुअल प्रेजेंट करना चाहता है, ही कैन प्रेजेंट इंडिविजुअल आइडियाज, लाइक जो मैंने आपको बोला, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, एनिमल साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडिपेंडेंट आइडिया, हाउस होल्ड, ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल रिसोर्स, एनर्जी एंड आर्टिजन. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस? Any questions, please? If you have some doubts, we can clear the doubts, mainly from the students. Because after the lunch, you have to present. Here only. Okay. Even every color here only they deserve their practice here. Okay. Then every student has to first identify the problem and try to find a solution of that problem. And later you can make your own group, or if you want to present as an individual, you are very welcome. लेकिन आप एक क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछा कि अगर आप हमें कुछ दे रहे तो हम क्या करेंगे, ये किसी ने नहीं पूछा. किसी के दिमाग में ये सवाल आया क्या? अनिवन? एक चीज में अभी इंडिया का एक कंसेप्ट है, मोदी जी का एक कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत. उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बताओ बेटा, बताओ बेटा. हाँ, सेल्फ सफिशिएंट. वो कैसे बन सकते हैं? हाँ, ओके. यू नो, जैसे सर ने बाहर पढ़ा है, मैंने बाहर पढ़ा है. वी हैव अ हाईली डिपेंडेंसी ऑन द टेक्नोलॉजी. तो जैसे कि मोबाइल फोन्स है, दूसरी टेक्नोलॉजी, वी आर डिपेंडेंट ऑन एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज, एन नंबर ऑफ इनोवेशन. तो आत्मनिर्भर का यही मतलब है कि वी हैव टू मेक आवर ओन थिंग्स. तो इट्स द बिगनिंग, इट्स अ स्टार्ट. तो हम साथ में हमें करना है कि किसी गोरे को तो नहीं ला सकते हैं कि वहां से इसको यहाँ पे प्लांट करेंगे और बोले कि ये कर दो. वी हमें करना है, साथ में करना है. तो इट्स द रियली गुड इंस्टीट्यूट लेड बाय द तलत सर. आई कॉल हिम इनोवेशन सेक्रेटरी. तो हर एक कॉलेज के बच्चे अगर 1000 नहीं 100 ही हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आएंगे तो वी कैन मेक ए रेवोल्यूशन. तो ये आपसे ही स्टार्ट होता है. वी आर लाइक दिस कॉलेज, वी एंड अदर लाइक माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वी आर ओनली द ब्रिज. तो करना आपको ही है. वी कैन मेंटर यू, वी कैन सपोर्ट यू फाइनेंशियली, but intellectually we can only support you, but you have to think, you have to do it. Let us do it today. Okay, thank you very much. तो ग्रुप के बारे में कोई क्वेश्चन है आपको? 5-5 बैठ के या 3-3 बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं. इस सेम प्रॉब्लम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है. तो यहाँ पे साहब भी बैठे हैं, पंकज जी भी बैठे हैं. तो वो हम आपके आइडियाज को फ्लोरिश करेंगे कि अगर इसमें ऐड भी करना होगा कि किस जगह पे हम ऐड कर सकते हैं इसको नॉवल बनाने के लिए. अगर मार्केट में अवेलेबल भी है, हम थोड़ा कॉस्ट कम करके डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. दैट इज स्टार्टेड. ओके, थैंक यू. Thank you, Mr. Naveen, for giving us a real concept of innovation. Now I invite our guests and students to have lunch with us. The venue for lunch is corridor there in the computer sciences department, and students will stay here. They'll be served from here only. Thank you. We'll meet at 2:30 for the next session.
बंद कर दो।
बार होता है कि जो मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है किसी खतरे में पड़ जाती हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत वगैरह हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बने, मतलब कि एक ऐसा डिवाइस बने हमारे फोन में, जैसे ही उस लड़की को अपने आप में कुछ ऐसे मतलब कि कुछ गंदा फील होने लगे, उससे पहले जो है मतलब कि वो फोन जो है वो हाई साउंड पिच पे मतलब कि बजना शुरू हो जाए और कोई भी लड़की जो है मतलब कि उसके साथ कुछ गलत ना हो सके। तो मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियां जो है वो मतलब कि एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में सेफ रहें, उनके साथ कुछ भी ना हो। थैंक यू। Good afternoon to all of you. I am here with a problem. Our problem faced by courts for marrying their daughters. Poverty is a disease, and we know that, but maybe we don't know the patients, courts, how they live their life with this disadvantage, and maybe we don't know how many difficulties they face, but we can try to do it. We should try to see the world from their perspective, and there is difference between ours and theirs, because when a girl born in a poor family, they think that it will be a burden on them in future, because they have to make her marriage and it's going to be very costly affair for them at which they cannot afford. This may lead to female genocide or difference between male and female sex ratio, and their income even less than their daily needs. It will become a very big deal for them. And now we can imagine how difficult for the poor parents to celebrate their daughter's marriage. There's only two choices left for poor parents, are either to sell their battery, assets, or to borrow some money to meet their financial needs. At that time, it makes their living conditions worse. And I have a solution for this problem. Government should establish an organization in their respective panchayats who help them financially and also provide a platform for those who want to donate voluntarily from their respective panchayats or from anywhere. And government should appoint a supervisor or officer who checks the working of the organization and also keep an eye on corruption. If it comes in work, it will be helpful to the poor. It also develops cooperative feelings in the society and gives relief to poor families. Thank you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा विषय है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष हमें लेने के लिए प्राणवायु, फल तथा उपयोग करने के लिए लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। पेड़ हमें बाढ़, भूस्खलन, भूमि कटाव, प्राकृतिक विपदाओं से बचाते हैं। एक अनुसंधान से पता चला है
कि पेड़ कभी भी अपनी उम्र के कारण समाप्त नहीं होते, बल्कि सूखने या गिरने या फिर काटने की वजह से ही समाप्त होते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ऊंचे वृक्ष बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शायद यही कारण है कि जिस जगह पर यहाँ ज्यादा वृक्ष होते हैं वहां पर ज्यादा बारिश होती है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ जो कि स्वीडन में है, जिसका नाम बिजिको ट्री है, वो 5059 साल पुराना है। इतना सब जानते हुए भी कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, हम लगातार वृक्षों की कटाई करते जा रहे हैं। हर 2 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के जितने पेड़ काटे जा रहे हैं। आए हम सबका कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं। पेड़ को बचाए रखने के लिए हम शिक्षा संस्थानों की मदद से एक बार फिर से हरियाली ला सकते हैं। हमें हर एक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों को एक सीमित मात्रा में पेड़ लगाने का लक्ष्य प्रदान करना चाहिए। जैसे कि मध्यवर्गीय स्कूलों को 200 से 300 के बीच में पेड़ लगाने के लिए लक्ष्य प्रदान करने चाहिए, तथा हाई सेकेंडरीज को 600 तक पेड़ लगाने का लक्ष्य प्रदान करना चाहिए। और हर एक स्कूल में एक ऐसी महीने में एक्टिविटीज आयोजित की जानी चाहिए जिससे कि बच्चों को पेड़ लगाने में पेड़ लगाने के बारे में पता चलता है। थैंक यू। Good afternoon to one and all present here. My name is Vishal Sharma from GDC Riasi. और सर मेरा टॉपिक जो है वो है ट्रांसपेरेंसी जो है पंचायत लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो है देती है पंचायत के लिए, काफ़ी ज़्यादा फंड्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं उसके बारे में। और पंचायत हमेशा इसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को बताती भी नहीं है कि इतने फंड्स आए हैं, इतनी स्कीम्स आई हैं लोगों के भले के लिए, ऐसा है। और जब ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो पंचायत वो सारा पैसा अपने पॉकेट में डाल देती है, मोस्टली ऐसा होता है। और सर इसका सोल्यूशन जो है मेरे पास ये है कि हम जो है एक पंचायत में काफ़ी ज़्यादा गांव होते हैं, तो हर एक गांव के एक ऐसे स्पॉट पर जहाँ पर सभी लोग आते जाते हैं मोस्टली, वहाँ पे हम एक नोटिस बोर्ड लगाएं। जैसे हमारे कॉलेजेस में होता है कि कोई भी नोटिस इशू होता है कॉलेज की तरफ से तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, तो सबको पता चल जाता है, सारे स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं उसके बारे में। जब ऐसा होगा कोई भी स्कीम या कोई भी फंड्स आएंगे पंचायत के लिए, वो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा होगा, सभी लोगों को, गांव के लोगों को पता होगा कि इतने फंड्स इस रोड के लिए आए हैं, इस काम के लिए आए हैं, तो लोग उस बारे में बात कर सकते हैं, आगे पंचायत से पूछ सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा सर, इससे करप्शन में भी हेल्प होगी कि जैसे ज़्यादातर ऐसा ही होता है मोस्टली कि जो सरपंच बनते हैं, पंचायत की बात करूँ आगे नेक्स्ट लेवल में, जो सरपंच वगैरह बनते हैं 2-3 साल बाद उनकी इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो आगे उनको कुछ तरीके खाती है। सर ऐसा ना हो, क्योंकि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है। इसलिए सर मेरा ये आइडिया कि नोटिस बोर्ड एस्टेब्लिश होने चाहिए विलेजेस के एक ऐसे स्पॉट पर जहाँ पर मोस्टली लोग आते जाते रहते हैं और उनको पता चले कि क्या स्कीम्स हैं, क्या फंड्स उनके लिए आए हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं आज की जनरेशन के लिए यहाँ पे सुसाइड बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। मैक्सिमम जो हमारी एज के बच्चे हैं, जैसे 20 से अबव या 20 से भी कम, वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन से लड़ने के लिए जैसे बाहर के स्टेट्स में देखें तो इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड किए गए हैं,
बट हमारे एरियाज में जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, JNK में बहुत कम इंस्टीट्यूट ऐसे पाए जाएंगे जहाँ पे बच्चों को मतलब लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। हमारे यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो हैं जहाँ पे पढ़ाया जाता है बट बुक्स से, बट ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है जहाँ पे बच्चों को लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, जहाँ पे उनको डिप्रेशन से लड़ना सिखाया जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे बच्चों को बताया जाए कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, कि लाइफ में सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खत्म कर दें। आपने उनको हर बजाज एक क्यों जो नहीं उनके बनाया? अंदर टैलेंट है वो उनको बाहर निकाल कर दिखाएं, जो उनके अंदर जो चीज है वो उसको बाहर निकाल के दिखाएं और उनको बताएं कि उनकी जिंदगी में वो खुद कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनको डिप्रेशन से लड़ना सिखाया जाए ताकि वो भी जिंदगी जीना सीखें। बस, थैंक यू। तू लेना भी है बड़ा तू ले जेने खिलाना दो, ठीक है मैं होना तेरे को टेंशन ही नहीं, आपको पता है कभी मैंने मना किया कर दे आपको, क्योंकि आजकल फुल हो बड़ा रेयर आता है। एक तो आपको पता है MI के नए फोन जब भी लॉन्च होते हैं तो बड़े रेयर आते हैं, वो कहानी है सारी। तुमने फिर भी कोशिश करता हो तो बजाज बन जाता है कैसे भी करके 5 के बच्चे। हाँ, तो अगर तो किस कॉलेज से हो? द बिजनेस स्कूल। जमीन यूनिवर्सिटी। MCA फिजिक्स। अच्छा पड़ोस में ये मतलब अब चेंज हो गया तो कॉलेज में टीचिंग में आ गया, वो खत्म कर दी यूनिवर्सिटी वाला काम। ठीक खाली PhD शेड तो सर इस पर ना मगर यहाँ से चेंज होगी, चेंज यहीं नहीं कोई बात नहीं, वो यहाँ से हो जाएगी। साइड से चेंज कर देंगे। सही साइड से नो प्रॉब्लम। आज यहाँ आज आप सब तो देखूंगा तो कोई दिक्कत है अपना लैपटॉप में चार्ज नीचे का कौन सा वाला कुछ भी ये लग जाएगा डल के जरा चार्ज लग जाएगा। चार्जर भी लाया मैंने ले ना तो इंडिया जल्दी कौन सा जल्दी भी फ्री चल जाएगी PPT X है ना, ये PPT नया वर्जन है। ये लैपटॉप में कल ही मिला है, मिल चल बोलो रहने कौन कौन है अच्छा ये आप पिक्चर से भी आ जाओगे फिर। कोई कहानी है कार्ड वो करा दूंगा मैं, वो मिल जाएगा उस पे भी। बस वही है बंदा कोई अपना खास होना चाहिए, बस फिर कल को ये ना बोले कि मैंने भैया फोन ही नहीं लिया तो गेम हो जाती है ना फिर। हाँ ये शेयर है अच्छा अच्छा। So good afternoon everyone. I am Nikhil Heer. Before explaining the idea, I want to introduce my colleagues, Mr. Sahil Verma and Mr. Fari Kaul, and also a story that relates to my grandmother. Grandmother जो मेरे grandmother थे, उन्होंने बैंक में काम किया 30 साल. After working for 30 years, at the age of 68, she got some serious health issues. उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए जिसकी वजह से उनकी किडनीज जो थी दोनों डैमेज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस शी हैड टू वेंट थ्रू ब्लड डायलिसिस फॉर 4 times. 4 टाइम ब्लड डायलिसिस के बाद उनका हेल्थ थोड़ा सा रिकवर किया था, बट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी दैट इंक्लूड्स वन प्रोडक्ट. ये सब एक स्टोरी एक प्रोडक्ट लिए दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम इन ग्रैंडमदर्स लास्ट डेज, दैट इज अडल्ट डायपर.
days before she went through dialysis for the first time, defecating become difficult for her. Defecating in old age is a bigger problem for old age people. Half our body was paralyzed, so we had to keep diapers every time because same time she got loose motion. After fourth dialysis she got better, but due to diapers she got bad sores. उनको बैड सोर्स से वापस गुजरना पड़ा। डिस्क्रेट ये जो सब सिनेरियो था, इसकी वजह से हमें सारा प्रॉब्लम्स हुई हमारी फैमिली को। मतलब उनकी 3 डॉटर्स थे, सन कोई नहीं था, तो उनका ध्यान उनको ही रखना पड़ रहा था। एंड हमें वापस उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा बैड सोर्स की वजह से। ड्यूरिंग दिस कोर्स हर वेट जो गेन हो गया 70 kg से 100 kg। सो व्हेन द वेट जब उनका वेट 100 kg हुआ तो हमारे लिए डायपर चेंज करना वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। मतलब तीनों डॉटर्स को मिला के भी डायपर चेंज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एवरी टाइम हमें जब भी डायपर चेंज करना पड़ता था तो काफ़ी एफर्ट्स या फिर मेरे बड़े भाई की भी जरूरत पड़ती थी, और कहीं ना कहीं पे वो मेरी दादी के लिए भी एक मूवमेंट वैसा क्रिएट करता था जो अच्छा एक मूवमेंट नहीं था। तो वे तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद तो हम ये एक प्रॉब्लम ही तरह आगे शो हो रहा था कि हाँ डायपर एक प्रॉब्लम ही है कहीं ना कहीं पे। तो इसको हम इसके सोल्यूशन के लिए हमने एक प्रोडक्ट और मैकेनिज्म सोचा है दैट इज मेड अप ऑफ थर्मल प्लास्टिक्स, कॉटन प्लाइज एंड सम स्टिचेबल प्लांट्स एंड फ्लशेस। We want to change the way of process of defecating and make it more easier, where we can work on complete easiness of defecating and no skin problems. And आगे की भी साइड कंटिन्यू। Hello. So what we gonna do? Replacing adult diapers with installable mechanism for defecating. Yes. So you all should be thinking why? Why not diapers? Or we have diapers in the market. Then what's the need? Or what's the problem with the diapers? So here are the problem with the diapers. First of all, skin problems. The problem with diaper is that they are enclosed, which is good for some scenario. It is helpful, but sometimes it can cause severe skin problems. You all might know what kind of skin problems. Like he also said, bed sores is a big problem for any patient. Yes. Secondly, changing diaper of babies is very easy. We can imagine, yes, baby छोटा ही होता है तो 3 बार करो 5 बार करो, not a big deal. So, but in adult diapers, due to weight and other problems जो उनको face करनी पड़ती है, it becomes much difficult. Thirdly, clearance. Cleaning such a mess is a big problem for caretakers as it takes longer duration and becomes more messy. The next issue with the diaper is that the cost perspective. Although the cost isn't much simple, अगर आप diaper की बात देखो average पे, it will cost near about 36 rupees on an average one diaper. As he has mentioned, लूज मोशन लगे तो 3-4 बार तो करना ही पड़ता है। इवन हॉस्पिटल में भी हो तो बार बार करना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ पे सराउंडिंग ऐसी होती है। ओके, सो सिंस वी हैव टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स, सो द कॉस्ट इज ऑब्वियसली इंक्रीजेस एट अ रैपिड रेट। लास्टली, इट बिकम्स स्मेली, uncomfortable, unhygienic and infectious for not only the one wearing it but also for the caretaker and others who are surrounding them, the people around. Now Shafali will tell you how our product Stuies will solve these problems. Over to you, Shafali. Thank you, Sadik. Good afternoon, everyone. So what our product Stuies will be able to handle is ease of wearing. Since adult diapers are difficult to use for both patients and caretakers as due to the issues related to cleaning and changing, our product structure will focus on the defecating part, which can be easily installed, removed. That is, easy changing and less cleaning process will be involved. Our product would easily be able to flush out the feces, like certain pipes and flushers will be introduced in our product. Due to the easy installation and changing mechanism, the skin issues caused by adult diapers can be reduced. Okay, why this product? Because it's unique, it's new, and no work has been done yet to solve these problems. And with our growing population of old people, it can come in handy. The product will be one of the first kind that requires less effort
can be worn and removed easily, and is reusable. We will design the product in such a manner. It is better than adult diapers, is cost efficient, is comfortable, with easy installation mechanism. That is which will be less of a hassle for both patients as well as for the caretakers. The study involved in this product formation would include sensation, use of material for both outer material of the product, which would require durability and reusability testing, and inner material for comfortable padding, the use of inlets and outlets for proper defecation, and further services provided to make it more easy and comfortable for patients with severe mobility issues. Our product will be provided in different sizes, would be with easy adjustable mechanisms. And now the business model of our product will be explained by Nikhil. Over to you, Nikhil. Yes, sir, technical part. अभी नहीं थोड़ा सा अभी एक्चुअली अभी मार्केट के थोड़ा सा अगर एनालिसिस अगर डायपर्स के बारे में एनालिसिस किया जाए बिफोर हमें क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए अगर हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में काम करना तो बिफोर हमें रिसर्च के लिए ज़्यादा अगर रिसर्च शुरू होगी तो डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडीज होगी उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हुई नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डिफिकेट पे कि फेसिस की जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो कितने क्या रिसर्च हो उस पर रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है जो मटेरियल्स होंगे जो हमारे एडल्ट डायपर्स में मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उसके कंपैरिजन में हम ऐसा क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलेगा सो मोर ओवर सबका बॉडी का साइज शेप सेम नहीं होता सो दैट्स एंड अगर फ्यूचर नो नो टेक्नोलॉजी इज कनेक्टेड विद द adult diapers yet सर वो सिंपल पैंट्स हैं अभी बस इतना ही डायपर कर दिया actually will be placing certain products which can absorb we can चेंज कर देंगे स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे इनोवेट अब जैसे इसमें हमने फ्लश लगाया है अब डायपर में फ्लश तो होता नहीं यस हाँ इनोवेट कर देंगे यस no sir sir it is mostly for people who have severe mobility issues sir change करना पड़ेगा but not that much not compared to the adult diapers compared to the तीन स्टूडेंट ने क्या किया उन्होंने एक डायपर बनाया इसका प्रोटोटाइप तो यूनिचार में कंपनी है यस यूनिचार के साथ यूनिचार की टीम वहां कश्मीर आ जाती है तो फिर उसमें कुछ उन्होंने प्रॉब्लम लेकिन टेक्नोलॉजी से लिया मैंने और फाइल वीडियो मांगा है तो वो सेंस करता है बेबी सेंसिंग सर IoT सेंस करता है कि ब्लड फूड हुआ तो देन ही कैन पुट अ सिग्नल जो कि ऐसे जब पेशेंट होगा या बच्चा होगा कि ये पेशाब करने वाला है ये गोइंग तो वो डिवाइस हमने बना लिया इट्स लाइक अ डायपर लाइक अ डायपर तो वो एक चीज अगर वो चीज इसमें आप इंकॉर्पोरेट करना चाहते हो कि ये है आप कह रहे हैं इसी से इसमें थोड़ा सा मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन वो चीजें आप इसमें ले ऐड करें क्योंकि डायपर तो कि वी नेवर नो कि जो पेशेंट है या उसको पहनना पड़ेगा वो कब डायपर की जरूरत पड़ेगी उसे बार बार चेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हिल नहीं पाएगा वो तो ये की पर इंस्टॉल हर समय एक जैसे कि अगर मैं सेंस मेरे को सेंस नहीं है हर समय कपड़े को टारगेट कर रहे हो मैं बता नहीं पाऊंगा डायपर इसलिए बनाते ना कि मैं बता नहीं पाता और पर्सन उसको बता नहीं पाते सर एक्चुअली हमारा जो डिज़ाइन है जिसे हमने सोचा हुआ डिज़ाइन तो वो ना स्ट्रेचेबल पैंट्स मतलब स्ट्रेचेबल पैंट्स का मतलब हुआ जैसे ही वो प्रोसेस हो जाता है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर सकते हैं एंड सेकंड थिंग इज वी आर यूजिंग वाटर फ्लशर्स क्या करेंगे जैसे फेसेस हो जाता है पेशेंट फेसेस रिलीज कर देते हैं तो वाटर फ्लशर्स हेल्प करेंगे उसको एग्जिट करने में यस सर दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेचेबल पैड्स मतलब बॉडी के सपोर्ट के साथ
उसको स्टिच हाँ, body स्टिचिंग की हेल्प देंगे। जैसे आप जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल सर वो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड वो की उसमें होगा, जाएंगी। वही फ्यूचर वही प्लान है हमारा। नीचे से आज तक वो फ्यूचर प्लान है इसका, इसी का है। वो टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट की है। मैं उसके वीडियोस आपके वो मैट्रेस से बिकेगी परचेज दैट मैट्रेस विद दिस उसमें बैठ के और आप सजेशन इज व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। जैसे हमने डायपर का फिगर आउट किया, फिगर आउट होंगे अल्टरनेटिव्स आल्सो जो मिल रहे हैं मार्केट में, आप उसमें बेस्ट बेटर क्या कर सकते हो, दैट इज कैच। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो एग्जिस्ट करता है, अगर जैसे डायपर से आपने एक अल्टरनेटिव ढूंढा, दैट इज सजेस्टिंग कि अल्टरनेटिव्स भी हैं कुछ, so you can again add you can again modify those alternatives, you can make those alternatives better, अलग-अलग perspectives. This is my end of the day is whether it is going to somebody is going to get it or purchase it or not, that for business people. Yes, yes. So that totally depends on the दूसरे को आपका Interested है। So think of those points before. मे बी जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो कि नीड्स के हिसाब से कि हम नीड्स पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि आपने काफ़ी स्टिचेबल, जैसे हमने स्टिचेबल पैंट्स के लिए कहा कि वो प्रॉपर हर टाइम पहना नहीं जा सकता। दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस कि हम काफ़ी टाइम के लिए नहीं, जब डेफिकेट का पार्ट आएगा तभी उसको स्टिच करेंगे एंड देन वी रिमूव इट। एंड सेकेंड थिंग इज वाटर जब आए, ऐसे तो वो जो डाइपर्स होते हैं वो वाटर लॉक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ना अगर वो टॉयलेट रिलीज भी करते हैं तो वो वहीं पे रहते हैं और वो स्किन इश्यूज कर देते हैं। स्किन इश्यूज होने की वजह से रैशेस हो जाते हैं, रैशेस के बाद बेड सोर्स हो जाते हैं। बेड सोर्स एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स। और अगर हम डाइपर्स में कुछ सोचें, कुछ बड़ा सोचें या फिर इसको रिप्लेस करने का कुछ और सोचें, डाइपर्स में इनोवेशन सोचें, तो लेकिन बेड सोर्स तो उस जगह से नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो टॉयलेट तो वहीं पे रहेगा ना। वो आपको देखना है। यस सर, मैं सिर्फ ये सजेशन दे रहा हूँ। यस सर, ऑल दी अल्टरनेटिव्स है उससे बेटर से यस सर। हाँ, इट इज ऑलरेडी बेटर ग्रेट, बट इफ देयर इज ऑप्शन, यस सर, यस 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 सर। एक्चुअली हम थोड़ा सा एनालिसिस रहता है जो हमने इस प्रोडक्ट के अडल्ट डायपर के ऊपर एनालिसिस किया था पीछे वाले। तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटी है। जैसे अडल्ट डायपर्स का भी जो मार्केट चल रहा है वो लास्ट ईयर 2018 में 11.5 टेक्निकल पर्सन इन योर सर। ये यूनिचार्म के ना फ्रेंड्स यूनिचार्म ने ही बनाया है मैमी पोको पैंट्स। सर ये फ्रेंड्स यूनिचार्म ने ही बनाया है, मैमी पोको पैंट्स उन्हीं का यूनिचार्म का। मैं एक काम कर सकता हूं, मेरा कोई लिंकेज नहीं है। अगर ये आप प्रोडक्ट बना के देंगे और फिजिबिलिटी होगी, आई कैन डेफिनेटली लिंक यू विद इन। श्योर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। यस सर, यस। तो जो उनके एक्स्ट्रा सर्विस है जो लोग रिसर्च अलायंस का उनके मेंबर भी है, वो यहाँ पे आए थे। तो उनके साथ हमारा वो एक होने वाला था, लेकिन लेकिन अगर इसको वायबल बनाओ तो सर ने कहा हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। श्योर। सॉरी सर। यस सर, यस सर, यस सर, दैट इज श्योर सर। ये हमारा प्लान था, वन ईयर का प्लान था हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ स्टडीज एंड वही स्टडी जो आप बोल रहे हो कि मार्केट में आप अल्टरनेटिव एंड ऑल बोल रहे हो। यस सर। एंड सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, थर्ड इज क्रिएटिंग द एंड प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट ट्रायल्स होंगे, ट्रायल्स के बाद लॉन्च एंड मार्केटिंग होगी। एंड दिस इज द समरी ऑफ स्टोरीज। तो defecating is a hectic problem for caretakers and an embarrassing situation for the ones wearing them. Our product can make easy for both. A parent is a more love and understanding while going through difficult times. Following are the outcomes of the product: no more chances of rashes and bed sores. Easy installing, using, and disconnecting.
proper ventilation and water movement, cost efficient and comfortable, easily disposable and environmental friendly. एंड सर बीच में एक स्लाइड में हमने फ्रेंड्स के बारे में बात की थी. फ्रेंड्स का एक डायपर का जो मार्केट है, अगर वो ऑनलाइन मार्केट ही देखा जाए तो वो ऑनलाइन अगर फैमिलीज को सर्व करते तो 30 to 500 फैमिलीज को सर्व करते हैं. बहुत अच्छी है ये मार्केट में एवरीथिंग इज देयर टेक्निकल पार्ट इन यस सर. ये सब कुछ कब होगा जब वो पार्ट सही होगा, उसको खरीदेगा कोई तभी जब वो चीज आएगा. सर ये सर एक्चुअली हमें भी यही है कि हम जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे सर्व करेगा, रिसर्च तो करेंगे उसी के लिए यस सर. सर ही इज टेक्निकल. यस सर. सर बीटेक नहीं बीसी ही इज टेक्निकल एंड सर. मोर ओवर हमारा जो नाम है ना स्टूइज, पहले जब हमने बताया था वो कहते थोड़ा मतलब बाहर का नाम लग रहा है बड़ा, फिर हमने समझाया था इट इज मेड अप ऑफ स्टूल एंड इजी स्टूइज. दैट्स ऑल. थैंक यू सर. आपने वो कॉमेंट करके दिया यस सर. यस सरकार सर से कांटेक्ट में नहीं करेंगे विल थिंक अबाउट इसमें जो टेक्निकली है ना उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके सर. सर ने एक और मॉडल दिया था ऐसे, एक और दिया था आइडिया, लेकिन वो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मैं जस्ट एक स्टूडेंट जो यहाँ से निकल गई है वो शायद बस और एक डिस्ट्रिक्ट से थी तो उनको जल्दी निकलना पड़ा. उनकी जो इनोवेशन है, जो उनका आइडिया था, वो एक्चुअली उनके पापा घर में खेती करते हैं तो उनके पापा ने एक थ्रेशर बनाया है घर में ही. तो उन्होंने एक मोटर को एक पंखे के साथ अटैच किया है तो उसमें वो आसानी से उसको थ्रेश कर सकते हैं और पैडी को. तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स हमारे साथ शेयर किए हैं तो मैं जस्ट उनको डिस्प्ले कर देता हूं. ये उन्होंने एक थ्रेशर बनाया है घर में. ये पैडी को थ्रेश करने के लिए उन्होंने खुद से ही बनाया. एक्चुअली उन्होंने एक टेबल पे एक मोटर को अटैच किया है एक पंखे के साथ. पंखे को अलग एक एंगल पे लिया है तो उसके साथ पंखे के साथ ऐसे रखते हैं तो उसको थ्रेश करता है आसानी से. तो इसको और चीजें देखेंगे, इसको सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से देखेंगे ताकि उसमें और कुछ चीजें ऐड हो जाए. तो बच्चों के जो आइडियाज यहाँ पे आए हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एक बच्चा यहाँ पे और एक कॉलेज से है, उन्होंने एक सर्किट ब्रेकर जैसे एटीएम होता है उसके बीच में कुछ नील्स मतलब लगाए हैं तो आप डाल देंगे तो वो नील्स कनेक्ट हो जाते हैं सर्किट के साथ. फिर अगर हमें उसमें बंद करना हो तो हम उसको निकाल सकते हैं तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा. वो एक सिंपल उन्होंने तरीके से उसको किया है. तो एक भी एक बेहतरीन चीज हमें, और ये चीजें कि लैंडलाइन फोन जो रीयूज हो जाए तो आज लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो एक इन्वेंशन और इनोवेशन का ये जो सबसे बड़ा नाता जो ये है कि वो चीजें पहले तो हम ढूंढते थे ये जैसा फोन कब आएगा, अब जब आया तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं करते. अब फेंकने के बजाय उसको फिर से इस्तेमाल करें, ये भी एक इनोवेशन है कि उसको फेंका ना जाए, फिर से इस्तेमाल करें हम. तो ये एक मैंने फोटो उठाया, मेरे अभी मोबाइल में पड़ा हुआ है. मैंने सर एक जगह पे अभी देखा है, दूर दराज पहलगाम के नजदीक में था. मैंने लोड कैरियर में घोड़े को देखा है. आज आप देखते होंगे कि श्रीनगर से जो भी पहाड़ी लोग आते हैं वो ट्रक में लेके आते हैं घोड़े को. तो घोड़े को एक समय पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए वो इंसान को मदद करता था जल्दी पहुंचने में. लेकिन आज उसी घोड़े को
कार में बिठा के ले जाते हैं हम। ये तब्दीली की सिवाय हैं, ये एक चीज को दूसरी तरफ उस तरफ बदल देते हैं कि इंसान का होश देखते देखते रह जाता है। तो ये जो चीजें नए जमान में आए, उन्होंने किस तरह से स्ट्रक्चर बाकी चीजों को तब्दील किया है, ये भी हमारे पास जो माइक्रोफोन पड़ा हुआ है, अगले 1 साल 2 साल के बाद इस तरह का नजर नहीं आएगा। यही इनोवेशन है। तो मॉडिफिकेशन जो भी इसमें एडिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा वो उसकी सूरत को बदल देगा, क्योंकि जो आज का नया दिमाग आएगा जिसको इसके साथ इंटरेक्ट या कंट्राडिक्ट होना है, वो नया स्टूडेंट होगा। उसको उसकी एवोल्यूशन पे नहीं जाना है कि कैमरा को किसने बनाया है, इस माइक्रोफोन को किसने इजाद किया, नहीं, उसने इस एग्जिस्टिंग ये माइक्रोफोन को बदलना है। वो इसमें खामी ढूंढता है या उसमें कोई ऐड करना चाहता है। तो सबसे जो नई चीज वजूद में आती है वो ज्यादा नए लोगों के लिए कारामद होती है, और उसी को हम दूसरे मानव में इनोवेशन कह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबों के लिए। आप फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स को देना पड़ेगा कॉलेज के हिसाब से और इसके लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास जिनके आइडियाज आए हैं वो हमने रिसीव किए, उनको एनालाइज करके हम आपके साथ एक ग्रुप बनाएंगे जो इस कॉलेज के नाम से हम क्रिएट करेंगे। तो उसमें जो भी आपका डेटा होगा, जो फर्दर इंटरेक्शन होगी आपके साथ रिलेटेड योर आइडियाज और इंक्यूबेशन के बारे में, किस तरह हम टेक्निकल सपोर्ट और जो बाकी चीजें उसको लिंक करेंगे आपके साथ। तो उस चीज में जो भी सुविधा होगी आप फर्दर कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। हमारे नंबर रहेंगे, नदीम साहब का नंबर है 9419001471 और मेरा है 9419412334। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका फर्दर कोई आइडिया होगा उसको प्रोसेस करने में हम उसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर।
A very good afternoon to all of you. Respected Principal Sir, our guest of honor for the evening, Mr. Sanjeev Rana, Additional Secretary to Government, Higher Education Department, all the dignitaries present here, senior professors and my colleagues, and all the young innovators. I welcome you all to the valedictory section of one-day technical workshop from Awareness Camp on Innovation, Incubation and Training 2021, Shaping Young Minds. I hope this workshop will be beneficial to our young minds who are the storehouse of creative and innovative ideas. To conclude this enlightening workshop, may I call upon the stage Mr. Sanjeev Rana, Additional Secretary, Higher Education Department, J&K, for concluding remarks. So please. Thank you very much for calling me here. I think many of the students would have taken something from this platform, and they would be refreshed in their mind, and we are expecting new ideas from them. And some of the ideas that have been pitched in today's session, the Gyan will carry them out to their conclusion. Rightly said, there was actually a lack of innovation ecosystem in our state, and higher education in association with Gyan India and the institution, other institutions like SMU, like CUJ, are helping to develop this ecosystem in our this state, UT, and the way the things are going, I think they are leading in the right direction, and hopefully we will be getting results within a few times. It will not be transformed into say a whole night or say 2 or 3 days, but it will take time, 5 months, 6 months, and we will be getting results out of it. So I very much thankful to our principal, Dr. Kusa, who has organized this workshop. And similar workshops are being organized in other colleges also. Next will be in Rajouri, and then we will move to the Dota, where the similar type of the program will be there. I thank you all for visiting this, spend your time and deliberation and effort. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Our esteemed guests have spared their invaluable time and graced the occasion. Our mementos are the token of our heartfelt gratitude. So may I request for the principal, sir, to kindly present a memento to Mr. Sanjeev Rana. Now I request Dr. Jagjeet Singh, convener of this workshop, to felicitate Mr. Nadine. Mr. Sabzar Wani, sir, kindly felicitate them also. मेरे हमारी पसंद आई।
GGM to formally present a vote of thanks. Respected august gathering of principals, our keynote speakers, members from GYAN team, principals, my worthy colleagues, my dear children, students, and the team members. It is my privilege to present the vote of thanks after doing such hard work, not by me, but by my principal sir, by the GYAN team, who was constantly backing us, the team, especially Professor Rakesh Gupta, who was really a motivating force to make the whole program a success. So here am I to present my vote of thanks. So first of all, I would like to thank our chief patron of all the activities in higher education department, Janab Talat Parvez Rohila Sahab, who always keeps us motivating. Although he is not present here physically, but I feel he will be present somewhere. He'll be listening us. He must be watching us all of that, and definitely he will be appreciating our efforts. Then I would like to thank the Professor MYP Zada Sahab, Director Colleges HED, and then my keynote speakers, Dr. Pankaj Mehta, Coordinator, University Innovation Cell Center, University of Jammu, then Dr. Swarkar Sharma, CEO, SMBDO TDIC. Then I would also like to thank the young motivators who motivated our children, I would say, who fired up the students of our college, Mr. Omkar and Mr. Harmanjot, who were specially called, and they gave their thought-provoking the ideas and lecture on very short note on the innovations created by them. Then I would like to thank Team GYAN, including Mr. Nadeem and including Mr. Sardarwani. Then definitely the principals who are always our guiding force, the principals of cluster colleges, and especially now the principals from GDC Riasi. We are fortunate enough to have you here. Thank you, sir. Then I would like to thank my own principal sir, who really remained as a worker, as a friend, as a colleague with us for organizing this event. He never showed anything like principal, but he was equally effortful with us to organize this event, to make this event a success. Then I would definitely, this event is incomplete without the participation of students. So the students from different colleges, whether the colleges were from Jammu district or not, they came here. I'm highly obliged. I'm thankful to you, because now we feel that you people have fire in your belly. You can work wonders. You just need the direction. And my dear students, I would definitely like to tell you that under the mentorship of our higher education department and the collaboration of Team GYAN, you can achieve what you otherwise thought was unachievable. Then definitely I will, last but not least, I've already thanked Dr. Rakesh, and I would individually thank all the other team members who were there constantly with me to make this event a great success. Thank you once and all. Thanks again. Thank you, sir. Now, we have a humble request to all of you that we want a group photograph for our GGM science college. So I request all of you to please so that we can have देखना नहीं तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको।
बच्चे भी अगर आते हैं आप बच्चे आ जाओ बैठे कहीं साइड पे खड़ा हो जाऊंगा। बच्चे आ गए एंड करें ना राकेश